Uh-huh. So, as you know that if anyone asks you that it starts from the question itself, that anyone asks you what is the definition of transformer. I'm not asking about the function or properties. I'm asking about the definition of the transformer. What you say? So it is a static device which is electrically isolated but magnetically coupled. That is the big problem, big issue nowadays. Whenever anyone asks about the transformer, we are just giving this example only. That transformer is a static device. It can step up or step down the voltage. But if you see now, literally, if you see, if anyone asks you the definition of the transformer, is that transformer can transfer the power from one point to another point. You see now, its name implies that transformers. So it can transfer the power. It have the capability to transfer the power from one side to another side. So if anyone asks you the definition of the transformer, because if you see there is a many more thing that the transformer has some purpose oriented definition. It's operating principle oriented definition. But if anyone asks you that the simple definition of the transformer is that it name implies that transformers, so it can transfer the power from one end to another end. So it means what? If we see the transformer can transfer the power from one point to another point. It means what? It means transformer have 2 points. So the first point is connected with the source. It's called the primary, and the second point it's called the secondary, and which is connected with the load. If you see the board, this one, if we connect the source here, so this one become primary, primary, primary side because it's a source side, and this one is our, if we connect a load, so this one is our load side, or this part called the secondary side. So it means what? It means later on we will discuss about why we need the transformer. At that time, your answer will be justified. Okay, है ना? Your answer is right, appropriate answer. But I am just asking about the definition. क्योंकि बहुत सारे इंटरव्यू में देखा हूँ, खुद देखा हूँ कि जैसे ही तुम ये बात बोलोगे कि स्टेप अप स्टेप डाउन, सो क्या होता है, क्या वो लोग बोलता है कि हम डेफिनेशन मांग रहे हैं. सो दैट्स व्हाई आई एम जस्ट इंट्रोड्यूस दैट वन ओनली, that if anyone asks you that what is the definition, appropriate definition of the transformer, so the appropriate definition of the transformer is that if we create some supply to the primary side, the power will be transferred to the secondary side. It means what? Transformer can transfer the power from one side means the primary side, to the another side. It means the load side or the secondary side. Okay, by means of mutual induction. So later on we will discuss about the mutual induction also. So now you see the primary side is called the source side. It means what? If we apply some energy to a closed conductor, and EMF will be set up, the primary coil, and that particular EMF try to leave in the secondary coil, which is our load side. Okay, as per the electromagnetic induction phenomena. Electromagnetic induction phenomena proves that if we energize one coil, and if we place that energized coil nearer to the non-energized coil, a flux linker will be set up, and due to the flux linkage, an EMF will be set up in the non-energized coil. It's called the electromagnetic induction law. As we know that, electromagnetic induction law, as we know that if we place, please mind it, if we place one charge conductor or charge coil with nearer with the non-electrically charged coil, definitely it also your closed path. So what will happen? The EMF, the line of force, will be set up in the your non-energized coil by means of mutual induction.
This is the mutual induction phenomena. So by depending upon the mutual induction phenomena, we can transfer the power from one point to another point. One point to another point. Mind it, please mind it, please mind it. If anyone asks you the what is the definition of the transformer, if you see the name transformers, it means it can transfer the power from one side to another side. One side to another side means what? Primary side to secondary side, or source side to load side, by means of mutual induction. So point is clear now? Yes, sir. So please note down this one also. You know? Okay. So one side to another side means one is our source side. That source side called primary side. Primary side. Okay. Those are the non-electrical background. Please note down this one. That source side called the primary side, and the secondary side, it means the load side called the secondary side. It means the energized coil part is called the primary side, and the non-energized coil part is called the secondary side. Secondary side is always equal with the load side. If anyone asks you, those are the non-electrical background. Secondary side means what? Secondary side means it's a load side. Okay, and the primary side will be your source side. So point is clear. So Yes, this is sir. the main funda of the transformer. So how the power transfer from the primary side to secondary side? By means of mutual induction law. By means of mutual induction law. As I was told you, that what is the mutual induction? Suppose I am just deliver the transformer knowledge to you without any physical contact. It is called the induction, mutual induction. Okay, so that is called the mutual induction. It means what? Before the mutual induction, self induction take place. आप लोग का 2 घंटे का क्लास लेने के लिए हमको भी 4 घंटा पढ़ना पड़ता है. सो कैसे हम पढ़ाएंगे ताकि आपको समझ में आए, कौन सा वाइटल पॉइंट रहेगा, तो जो कि फोकस करना है, तो ये सब चीज जो हम खुद पढ़े हैं, दैट इज कॉल्ड द सेल्फ इंडक्शन. So once the self induction takes place, then after we proceed for the mutual induction. So self induction कहाँ पे हो रहा है? Self induction हो रहा है primary side में. Once you connect the source with the coil, automatically self induction takes place. So in this position, the self induction takes place. This position, self induction takes place. So after self induction, we are proceed for the mutual induction. It means what? Whenever we keep one non-charged closed conductor, in nearer to the closed charged conductor, one flux linkage it try to set up, and that particular flux linkage is called the mutual induction. तो नॉन चार्ज कोई भी इलेक्ट्रिकल कंडक्टर को अगर चार्ज इलेक्ट्रिकल कंडक्टर के सामने रखेंगे तो क्या होगा? एक लाइन ऑफ फोर्स या फ्लक्स लिंकेज सेटअप होगा, दैट इज कॉल्ड द म्यूचुअल इंडक्शन. तो अगर म्यूचुअल इंडक्शन कोई इलेक्ट्रिकली पूछेगा तो आप उसको ऐसे आंसर दे सकते हो. ठीक है, तो अभी हम लोग आते हैं, जैसे हम लोग नेक्स्ट पॉइंट में दिए हैं. सो नेक्स्ट पॉइंट इज दैट there is a two type of core. Basically, if you see in electrical system now, there is a two type of core. Two type of core. One is our iron core, and another is our air core. So iron core means what and air core means what? Core means what? Core means a limb. Limb means what? कि एक सपोर्ट. लिम्ब का मतलब क्या होता है? कोर का मतलब होता है लिम्ब, LIMB, लिम्ब. और लिम्ब का मतलब होता है एक सपोर्ट. मतलब क्या है कि जैसे आप कोई वाइंडिंग को माउंट करने जाओगे, if you are going for the mounting the winding, we need a support, we need a particular support. That particular support is made by the iron, so it called the iron core. और एयर कोर क्या होता है? एयर कोर में हम लोग कोई भी सपोर्ट आयरन से नहीं लेते हैं. हम लोग क्या करते हैं? इंसुलेटिंग पेपर को मोल्ड आउट करते हैं. लाइक if we took a insulating paper like this, try to roll this one and then we mount the winding. It's called the air core.
So no iron will use here. Okay, so basically we use two type of core. One is our iron core, another is our air core. Basically air core used in a signal system. जो भी सिग्नल सिस्टम का डिवाइस होता है, या जो हम लोग लो इलेक्ट्रिक करंट का जो वोल्टेज का जो हम लोग डिवाइस लेते हैं, ऑल आर मेड बाय द योर एयर कोर. बट रेस्ट ऑफ दैट, जितना भी ट्रांसफार्मर हम लोग करते हैं, जितना भी इलेक्ट्रिकल इक्विपमेंट हम लोग लेते हैं, सभी मेरा क्या होता है, आयरन कोर होता है. तो आयरन कोर, तो अब देखो मैं फिगर को ड्रॉ किया हूं. दिस इज द जनरल फिगर ऑफ द ट्रांसफार्मर. You see that? So this winding connected with the source. You see that? This one is our AC source. So we can write that it's a single phase connection with 220 volt or 415 volt, whatever it is, 415 volt or 220 volt, 220 to 30 volt, 5 ampere current or approx 15 ampere current with our 50 hertz frequency. So this is the rating of the source. So this side, the source is connected with this side. So this side called your primary side, because source is connected with this side. So it's called the primary side. And now you see that this side is connected with the load. So this one called the secondary side. It's the general diagram of the transformer. You see that this one is the general diagram. Now you see that we use two line here. If any diagram, if you see that there is a two line between two coils, it definitely is your indicate that iron core. It means what? That particular machine made by some iron support. Okay, so these two lines symbolize your iron core. Okay, iron core. So that one, this one is the primary side, this one is the secondary side. Secondary side is connected with the load, and the primary side is connected with the source. I am repeating it many times. Why? Because those are the non-electrical background. Please remember this one. The primary side is always connected with the source, and the secondary side is always connected with the load. But you can change the position also. As we know that the electrical system is a bilateral network. Electrical system is called the bilateral network. So bilateral network means what? Suppose if we swap this source into this position, it becomes the primary side. Then this side become the primary side. Now, so if this coil is connected with the source, so automatically this part is connected with your load side. So this side become your secondary side. So you can change as per your requirement. You can swap the position also. So because electrical network is our bilateral network. Bilateral network means what? If we swap the source and with the load, the power flow direction will be changed, but power will be flow. Okay, so it means what? If we swap the position, automatically what will happen? The winding nail will be changed. So suppose this part is connected to the source, so it means what? It means this side becomes the primary side and this side becomes the secondary side. Okay, so now come to the next point. Okay, so this one is clear now. Those are the non-electrical background. Yes, sir. Yes, Yes, sir. yes, sir. And which one called the secondary side? जहाँ लोड लगा हो, जहां पे लोड लगा रहेगा, that is secondary side. Secondary side. जहाँ सोर्स लगा हो. सोर्स लगा रहेगा. कोई भी डायग्राम में जब तुम लोग डायग्राम देखने जाओगे ना, तो देखना ये डायग्राम नहीं रहेगा, या पीपीटी में जो डायग्राम है वो नहीं रहेगा. डायग्राम रहेगा ऐसा. तो बीच में जो दो लाइन दिया हुआ है, उसका मतलब क्या है? आयरन कोर. आयरन कोर. तुम एक चीज पूछ लेना, बहुत सारा जगह में मैं जहाँ पे प्लांट में काम करता था, इंजीनियर लोग भी इसको कंफ्यूज कर जाते हैं. बोलता है कि ये लाइन जो है ना, ये लाइन म्यूचुअल इंडक्शन को शो करता है. बट इट इज कंप्लीटली रॉन्ग. ये म्यूचुअल इंडक्शन को शो नहीं करता है. ये क्या करता है? एक क्रॉस सेक्शनल व्यू है. दिस वन इज द क्रॉस सेक्शनल व्यू ऑफ दिस आयरन कोर और योर ट्रांसफार्मर. तो अगर क्रॉस सेक्शनल व्यू लोगे ना, तो दो टर्मिनल ऐसे सामने निकल के आएगा. मान लो अगर इसको ही हम लोग ले लेते हैं, ये मार्कर पेन को, इसको अगर बीच से काटेंगे तो दोनों साइड निकल के आएगा.
तो it symbolize the iron हाँ पूछो मुझे सुनाई नहीं दे रहा है सर साउंड बहुत धीरे आ रहा है सर, माइक ठीक कर लीजिए ना। अच्छा मेरा साउंड क्लियर नहीं आ रहा जी सर, धीरे सर, माइक थोड़ा नजदीक आ रहा है, माइक थोड़ा नजदीक कर लीजिए। हाँ अच्छा ठीक कर लो हाँ बताओ अब क्वेश्चन क्या था बताओ ना क्वेश्चन कुछ कोई पूछा था सर हाँ बताओ एयर ट्रांसफर क्या होता है थोड़ा सा बताएं। तुम्हारा आवाज सही में नहीं आ रहा तुम मैसेज कर दो टेक्स्ट सर ट्रांसफार्मर का जो डेफिनेशन था कि वो इलेक्ट्रिकल पावर वन पॉइंट से दूसरे पॉइंट तक ले जाता है सर वो पॉइंट की जगह हम लोग इलेक्ट्रिकल सर्किट भी लिख सकते थे फ्रॉम वन सर्किट टू अनदर सर्किट। Exactly. You are absolutely right. Now you are more correct. एकदम सही बात है हम लोग बोल सकते हैं because you see now here we use two circuits so it means what one is our primary side it means what it connected with the source and another part is the load side so if we are not make one complete circuit how the self induction and the mutual induction takes place as I was told you that initially once you connect the source with the coil initially it will be self induced का मतलब क्या होता है कि मैं तुम लोग को पढ़ाने के लिए मैं खुद भी पढ़ के आया हूँ और ये समझ के आया हूँ कैसे मैं पढ़ाऊंगा तो ये दिस इज कॉल्ड द सेल्फ इंडक्शन अब जैसे ही विदाउट फिजिकल कॉन्टैक्ट I am just transferring my knowledge towards you it is called the mutual induction definitely so without closed circuit you cannot develop the self induction as well as the mutual induction so you are absolutely right transformer it means it can transfer the one circuit to another circuit it transfer the power from one circuit to another circuit it's absolutely right very good answer अब बोल सकते हो एकदम बोल सकते हो but initially once we connect the source with the your coil self induction takes place then we go for the mutual induction and this symbol is for the iron core not for the mutual induction mind you so now come to the next point okay so एयर कोर को बताइए ना सर थोड़ा सा। हाँ सर जी एयर कोर नहीं समझ में आया क्या बोल रहे एयर कोर समझ में नहीं आया एयर कोर का मतलब ये होता है जैसे कि नाउ यू सी दैट suppose we have this winding we have suppose we consider this one is our winding okay this one is our winding and for that you need some iron support to mount this winding है ना तो हम लोग कैसे कर सकते हैं हम लोग ये आयरन सपोर्ट को ले लिए आयरन सपोर्ट के ऊपर हम लोग क्या किए ऐसे माउंट किए तो ये मेरा हो गया आयरन कोर ओके नाउ अगर हम लोग को मान लो लोअर वोल्टेज के लिए जाना है क्योंकि आयरन कोर में क्या होता है ना आयरन कोर जितना तुम यूज करोगे देयर विल बी पॉसिबिलिटी ऑफ द लॉस पॉसिबिलिटी लॉस मतलब क्या होगा आयरन कोर का आयरन में मैग्नेटाइज तो उसके लिए हिस्टेरेसिस लॉस आता है बहुत सारा लॉस टेक प्लेस होता है आयरन को लेंगे तो अगर हम लोग जो प्रिसाइज वर्क करते हैं प्रिसाइज वर्क मतलब क्या है जो सोफिस्टिकेट वर्क करते हैं मतलब मान लो सिग्नल सिस्टम में जो यूज हो रहा है तो उस कंडीशन में ना हम लोग थोड़ा सा भी लॉस को बेयर नहीं कर सकते हैं तो एट दैट कंडीशन वी यूज अ इंसुलेटिंग पेपर लाइक दिस सपोज दिस वन इज आवर इंसुलेटिंग पेपर को ऐसे रोल्ड आउट करने के बाद हम लोग क्या किए इसके ऊपर हम लोग कोर को डाल दिए ऐसे करके तो ये बन गया एयर कोर अब मान लो ये जो दो टर्मिनल है ये दो टर्मिनल में हम लोग अगर सोर्स को अप्लाई करेंगे तो जैसे ही सोर्स को अप्लाई करोगे इट्स अ क्लोज कंडक्टर तो क्लोज कंडक्टर में क्या होगा तुम्हारा ईएमएफ इंडक्शन होगा एज पर द लॉ सेल्फ इंडक्शन होगा किसमें होगा कोर में होगा वायर में होगा अब वो वायर जो एनर्जाइज्ड हो गया इसके सामने अगर कोई नॉन एनर्जाइज्ड कॉइल को रखोगे तो वो फ्लक्स लिंकेज करेगा तो इसके लिए हम लोग क्या सपोर्ट लिए इसके लिए हम लोग इंसुलेटिंग पेपर का सपोर्ट लिए तो टेक द सपोर्ट फ्रॉम इंसुलेटिंग पेपर सो इंसुलेटिंग पेपर से जो सपोर्ट से हम लोग वाइंडिंग को माउंट करते हैं दैट इज कॉल्ड योर एयर कोर क्योंकि सर ये कहाँ यूज होता है लोग आयरन यूज करते हैं तो आयरन में क्या होता है आयरन इज ए magnetic material so it means what it have some saturation limit also
तो सैचुरेशन लिमिट का मतलब क्या होता है? इट क्रिएट सम एरर आफ्टर सैचुरेशन, है ना? तो वो जो एरर होता है, माइन्यूट सा जो एरर आता है ड्यू टू द हिस्टैरिसीस लॉस, वो बीच का जो भी आप लोग पढ़े हो, तो वो लॉस को भी ना हम लोग सिग्नल सिस्टम के लिए या कोई सोफिस्टिकेटेड वर्क के लिए हम लोग बेयर नहीं कर सकते हैं. So that's why we use some insulating paper, and upon that insulating paper we just mount the winding. सर जो प्राइमरी कॉइल है ये हाँ. सोर्स से कनेक्टेड है, तो ऑलवेज इसमें जो नंबर ऑफ टर्न है वो फिक्स होंगे क्या? फिर से बताओ एक बार. सर जो प्राइमरी कॉइल है ये हाँ. सोर्स से कनेक्ट अपन करके रखेंगे इसको, जो इसमें हाँ. नंबर ऑफ टर्न्स हैं वो ऑलवेज फिक्स होंगे, तो इसको वेरी कर सकते हैं हम? हाँ, जैसे तुम अगर मान लो अगर हम लोग एक ट्रांसफार्मर को डिजाइन कर चुके हैं, ट्रांसफार्मर, वंस यू डिजाइन योर ट्रांसफार्मर ना, योर नंबर ऑफ टर्न विल बी फिक्स्ड, बिकॉज डिपेंडिंग अपॉन द नंबर ऑफ टर्न यू कैन डेवलप योर ईएमएफ. सो अगर मेरा ईएमएफ फिक्स्ड है, मेरा वोल्टेज फिक्स्ड है, जैसे मैं एग्जांपल देता हूँ, जैसे कि मान लो जो भी मेरा जनरेटिंग ट्रांसफार्मर है, जनरेटिंग ट्रांसफार्मर होता है, that generating transformer is connected after the generator. Okay, so now you see that generator output is our 16.5 kV for 250 megawatt machine. For 250 megawatt generator, the output is 16.5 kV, and that generator is connected with the grid, and let's assume that grid voltage is 220 kV. So what you will do, क्योंकि हमको 16.5 kV से 220 kV जाना है, so you have to design one transformer such a way that it can develop that output voltage in 220 kV. So it means what? The number of turns, suppose this winding, this part is connected with the source, so this one is our primary side, and this part is connected with the grid, so this one is our secondary side. So primary side deals with your 16.5 kV, so it means what? The number of turns is designed in respect of 16.5 kV. And in similar fashion, the secondary part is connected with the 220 kV. As we know that if we increase the number of turns, automatically voltage will be increased. So it means what? That secondary winding will be designed in such a way that it can develop that 220 kV. So it means what? Once you fix your DT corresponding the source and the load, automatically the number of turns will be fixed. Suppose you have that 600 megawatt generator. 600 megawatt produce that 21.5 kV or 21 kV. So it means what? The generator winding will be depending upon that 21.5 kV and 220 kV. Source side is connected with the 21.5 kV. It means what? The number of turns is required to maintain that 21.5 kV. So automatically, once you fix your voltage level, automatically your number of turn will be fixed. सर हेलो सर. हाँ. हेलो सर. हाँ सर, तो फिर इन केस में तो फिर प्राइमरी साइड में आपका नंबर ऑफ टर्न फिर ज्यादा होना चाहिए सेकेंडरी की अपेक्षा फिर. हाँ, वो पॉइंट में हम लोग आते हैं. वो पॉइंट में आते हैं, उसको छोड़ के कुछ क्वेश्चन, क्योंकि उसको हम लोग स्टेप अप स्टेप डाउन कहते हैं, उसका कॉन्सेप्ट में हम लोग आते हैं. सर और सर वो डायग्राम का थोड़ा सा दिखाइए ना, उसमें कुछ समझना था सर. कौन सा डायग्राम? हाँ सर, ये जो नीचे वाला जो आप डायग्राम बनाया है, ये जो कॉइल है लेफ्ट साइड में सर. हाँ सर, जिसको आप मिटा. इट्स नॉट सिंगल लाइन डायग्राम. जी. हेलो सर. This is our general transformer symbol. It's a zigzag line. This one is our generator. Source side. So it means the generator connected with this part. So this one is our primary side, and this part is our secondary side, and this is our load. Or you can say that it's our bus. So suppose if we consider this one is a 250 megawatt. So output of the 250 megawatt is 16.5 kV. Okay. So this winding, the primary side is connected with the 16.5 kV, and it tries to step up the voltage in 220 kV. So this one is our secondary side, and the secondary winding is designed in a 220 kV. So number of turn in secondary will be high, but it will be fixed as per the 220 kV. हाँ बताओ. नहीं हो गया सर, समझ में. सर
हेलो सर। हाँ हाँ सर सिंगल फेस में 110 था सर, 220 पता, तो सिंगल फेस में 415 भी सिंगल फेस में होता है क्या? हाँ 415 में क्या होता है ना, 415 जब तुम लोग शायद जो लोग इलेक्ट्रिकल से वो जानते हैं, 415 वोल्ट अगर लाइन वोल्टेज होगा ना, उसको फेज वोल्टेज क्या होता है ना, 415/3। ये लाइन और फेज को हम बताएंगे एक दिन, तब जाके ये क्लियर हो जाएगा। मतलब जो घर के सामने तुम्हारा लाइन जा रहा है ना, दैट विल बी योर 415 वोल्ट। जैसे ही मेरे घर में आ रहा है एक फेज और एक न्यूट्रल ना, so it become 220 volt or 230 volt, okay, because we consider the phase connection. So in case of line, it's a VA equal to 415 volt, and once we go for the V phase, VA is our 415 volt. जो मेरा घर के सामने से जो लाइन जा रहा है, मेरा घर के सामने से जो लाइन जा रहा है, that will be a 415 volt. Once you come to the phase volt connection, it means if you consider the one phase one neutral, automatically the 415/3 is your input voltage, and that will be your 230 volt. सर जनरली हमको जो 415 वोल्ट है वो दो फेस के है नहीं, 415 वोल्ट जो होता है वो तुम्हारा होता है 3 फेज विथ 1 न्यूट्रल। 3 फेज जो मेरे घर के सामने से जा रहा है, घर के सामने क्या जाता है, 3 फेज जाता है और एक न्यूट्रल जाता है। हम लोग मेरा ये घर है तो मैं एक फेज लूंगा और एक न्यूट्रल लूंगा, एक न्यूट्रल लेंगे, Y B न्यूट्रल, तो 3 फेज विथ 1 न्यूट्रल इज आवर 415 वोल्ट। इसको हम लोग डिस्ट्रीब्यूशन वोल्टेज कहते हैं। तो सर अपन जैसे मान के चलिए, जैसे न्यूट्रल के रिस्पेक्ट में अगर किसी फेस RYB किसी फेस के साथ अगर अपन मल्टीमीटर लेके चेक करेंगे वो 220 मिल रहा है, लेकिन अपन R के रिस्पेक्ट में Y को या तो R के रिस्पेक्ट में B को चेक करें तो 415 मिलता है। देख लो बता देते हैं। तुम्हारा जो क्वेश्चन है ना, जैसे कि मान लो घर के सामने जो लाइन जा रहा है RYB और ये मेरा है न्यूट्रल, ठीक है ना। अगर तुम इधर कोई वोल्टमीटर कनेक्ट करोगे तो तुमको मिलेगा लाइन वोल्टेज, ओके, दैट इज इक्वल टू योर 415 वोल्ट, ठीक है ना। अब जैसे कोई वोल्ट, जैसे कि मान लो RY के बीच में कनेक्ट किए, Y बीच में कनेक्ट करोगे तो भी मुझे मिलेगा 415 वोल्ट, ठीक है ना। अच्छा, अगर हम लोग R और न्यूट्रल के बीच में कनेक्ट करेंगे वोल्टमीटर, R और न्यूट्रल के बीच में कनेक्ट करेंगे तो क्या होगा 415/3, जो कि मेरा आएगा कितना 239 पॉइंट समथिंग। और एज पर इंडियन स्टैंडर्ड रूल क्या है कि ±10% हम लोग बेयर कर सकते हैं, अप एंड डाउन हो सकता है, तो हम लोग इसको बोलते हैं अप्रॉक्स 230 वोल्ट और 220 वोल्ट। तो ये जैसे मतलब क्या होता है, कोई भी वोल्टमीटर में एक टर्मिनल अगर फेज में जाता है and one terminal goes to the neutral, it means you are find out the voltage in respect of neutral, it's called the phase voltage, it's called the phase voltage, okay। और दोनों लाइन के बीच में जो वोल्टेज मेजर करोगे that will be your line voltage। तो line voltage is always greater than your phase voltage, because in case of phase definitely your one point will be your neutral point, one point will be your neutral point or common point, okay। But in case of line voltage we are just going to consider two line only, ठीक है। तो इसको हम लोग लाइन वोल्टेज कहते हैं, इसको हम लोग फेज वोल्टेज कहते हैं। तो मतलब क्या है कि जैसे कि देखो ना, कोई भी लाइन के अंदर के जैसे RB के अंदर भी मेजर करोगे तो भी वो 415 वोल्ट आएगा, ठीक है ना। और BN के बीच में जैसे जाओगे, YN के बीच में जाओगे, RN के बीच में जाओगे, तो यू हैव टू गेट द फेज वोल्टेज। और फेज वोल्टेज क्या होता है, लाइन वोल्टेज बाय √3। ये चीज मैं बता दूंगा एक दिन क्लास में, एक छोटा सा कैलकुलेशन करके दिखा दूंगा, ठीक है। ओके सर। सर पॉइंट समझ में तो आया ना। ट्रांसफार्मर में जो वाइंडिंग जिस पे रहती है उसको क्या बोलते हैं सर, जिस पे वाइंडिंग ट्रांसफार्मर हम को करते हैं? यही पॉइंट को मैं पहले 2 पॉइंट को नाम लिया था ना, एक नाम लिए थे कोर के बाद एक नाम लिए थे लिम। तो हम लोग क्या करते हैं, लिम का मतलब क्या होता है तुम्हारा, जैसे कॉलम जिसको कहते हैं, कॉलम इट मींस सपोर्ट। तो ये जो पार्ट होता है, एक पार्ट होता है दैट इज कॉल्ड आवर लिम। तो जिस कोर के ऊपर, जिसके ऊपर हम लोग वाइंडिंग को माउंट करते हैं, दैट इज कॉल्ड द लिम। और लिम बहुत टाइप का होता है, ई टाइप, आई टाइप, बाद में दिखाएंगे हम कितनी है। तो लिम को हम लोग अरेंज करके हम लोग को कोर मिलता है। आफ्टर अरेंजिंग द लिम वी गेट द कोर, बट इंडिविजुअल सपोर्ट कॉल्ड लिम, ठीक है ना, LIMB, लिम का मतलब होता है सपोर्ट, जिसके ऊपर हम लोग वाइंडिंग को माउंट करते हैं।
ठीक है? यस सर। सर ओके सर। सर एयर कोर जो आपने बोल रहा था, बताओ सर सर एयर कोर जो आपने बोल रहे थे वो कहाँ यूज होता है सर? जो छोटे इलेक्ट्रॉनिक सर्किट्स में यूज होते हैं क्या? नहीं, हम जो क्या बोले, PCBs वगैरह जहाँ पे ना अगर छोटे, अगर कोई पूछेगा ना एयर को कहाँ पे यूज करता है, तुम ये सिर्फ टेक्निकल वे में जानो। हाँ, ये बात तो सही है कि हम लोग छोटे डिवाइस में यूज करते हैं, सिग्नल सिस्टम में यूज करते हैं, बट यू गो फॉर द टेक्निकल वे। टेक्निकल वे में ऐसा बोलना, सर जहाँ पे मैं आयरन लॉस को बेयर नहीं कर सकता हूँ, जहाँ पे हम लोग आयरन लॉस को बेयर नहीं कर सकता हूँ, at that condition we use the air core। क्योंकि आयरन का क्या होता है ना, आयरन एक मैग्नेटिक मटेरियल होता है एंड ईच एंड एवरी मैग्नेटिक मटेरियल हैव सम सैचुरेशन लिमिट, और जैसे ही तुम सैचुरेशन लिमिट में आ जाओगे ना, इट क्रिएट्स सम योर एबनॉर्मलिटी, एंड वो एबनॉर्मलिटी इट जस्ट रिफ्लेक्ट टू योर सिस्टम ओनली। तो वो जहां पे मैं एबनॉर्मलिटी को अलाउ नहीं कर सकता हूं, एट दैट पोजीशन वी यूज द एयर कूल। ठीक है? ओके सर। हाँ, अच्छा और कुछ क्वेश्चन? तो मैं सेकंड पॉइंट में आता हूं। सेकंड पॉइंट इज दैट, अगर कोई पूछेगा व्हाई वी रिक्वायर द ट्रांसफार्मर, फर्स्ट क्वेश्चन इज दैट व्हाट इज द डेफिनेशन ऑफ द ट्रांसफार्मर। सो योर डेफिनेशन विल बी transformer can transfer the power from one point to another point or one circuit to another circuit. So now if anyone asks you what is the purpose of your transformer, mind it, the purpose of the transformer is to meet up the load demand. Mind it, please note down it. Transformer can meet up the load demand. Meet up the load demand means what? Suppose if you see our JPL GT transformer, generating transformer, as I was told you that our generator is rated with 250 megawatt. Our generator is rated with 250 megawatt, and our grid is our 220 kV. Now, if you want to transmit your power, so you have to step up your power, step up your voltage, because that 250 megawatt produce 16.5 kV. Okay, so it means what? You have to step up the voltage from 16.5 kV to 220 kV. So that's why we use a transformer, and that transformer is help to meet up our voltage level, required voltage level. Okay, so transformer can help to meet up our load demand. Okay, keeping frequency constant, keeping frequency constant, keeping frequency constant. Now if you see that as per your load demand, suppose our load demand is 220 kV. Okay, our load demand is 220 kV. So it means what? You have to step up your voltage level. Suppose if you have the grid is 11.5 kV, so it means what? If you have to step down the voltage. So step up and step down is the phenomena related with your load side. If your load demand is high, you need to increase the voltage. If your load demand is low, so automatically you have to decrease the voltage. Okay, so why we require the transformer? Transformer can meet up the load demand by changing the voltage level. Okay, क्योंकि अगर मान लो मेरा वोल्टेज लेवल हाई है, मैं फिर से रिपीट कर रहा हूं, अगर मेरा वोल्टेज लेवल हाई है, so you need to step up your voltage. अगर मुझे वोल्टेज को रिड्यूस करना है, you have to step down the voltage. Okay, so अगर कोई पूछेगा what is the purpose of the transformer, the purpose is very simple. The purpose of the transformer is very simple. It just try to meet up the load demand. And how it try to meet up the load demand? By increasing the voltage level as per your rated, or it can decrease the voltage level as per the rating. Okay, so point is clear? Okay sir.
So if anyone Yes. asks you, देखो हम ये चीज को ऐसे क्यों पढ़ा रहे हैं, पता है ये चीज को इसीलिए पढ़ा रहे हैं कि जब तुम इंटरव्यू देने जाओगे ना, तो इंटरव्यू जो ले रहा है ना उसका मेंटलिटी को जज करना पड़ता है, क्योंकि अगर इंटरव्यू में अगर तुम्हारा फर्स्ट इंप्रेशन जो होगा ना वही तुम्हारा लास्ट इंप्रेशन होगा, तो फर्स्ट इंप्रेशन और इम्पैक्ट को ना प्रॉपर देना चाहिए। जैसे मैं एक छोटा सा एग्जांपल देना चाहता हूं तुमको, एक एग्जांपल देना चाहता हूं, ठीक है ना। प्लीज क्लास को जो भी बंदे हो प्लीज लेफ्ट मत करना, क्योंकि जो भी चीज हम लोग डिस्कस करेंगे दैट इंटायर पार्ट इज रिलेटेड विद योर इंटरव्यू। जैसे तुमको ना सबको सुनाई दे रहा है ना, तो मैं एक छोटा सा एग्जांपल देता हूँ। एग्जांपल ये था, जब मेरा इधर इंटरव्यू हुआ था ना, तो देखो कैसे क्वेश्चन आता है। तो हमको पूछा गया था, इधर था जो ईडी सर थे, बड़े बड़े आदमी लोग थे बैठे हुए। पहला क्वेश्चन आया ऐसे करके, अच्छा बताओ तो ट्रांसफॉर्म, इंग्लिश में ही हो रहा था, मैं आपको हिंदी में बता रहा हूँ। तो ट्रांसफॉर्मर इज ए स्टैटिक डिवाइस और काइनेटिक डिवाइस, ये क्वेश्चन मुझे पूछा गया था। स्टैटिक डिवाइस। स्टैटिक डिवाइस है। Static देखो device. अभी ना देखो कैसा, देखो तुम लोग बोले स्टैटिक डिवाइस ना, देखो एकदम राइट, यू आर राइट, बिकॉज स्टैटिक डिवाइस का मीन्स क्या होता है, प्लीज थोड़ा सा सुनो अच्छा से, बहुत काम में आएगा। स्टैटिक डिवाइस का मतलब क्या होता है कि that machine have no rotating part, like your generator, like your motor, all have internal rotating element, so that is called it's a rotating device. But if you see your transformer have no rotating part inside, है ना, तो इसको हम लोग क्या बोल सकते हैं, इट्स अ स्टैटिक डिवाइस। वेरी गुड आंसर। बट मेरा क्वेश्चन क्या था पता है, मैं फिर से रिपीट कर रहा हूँ, ट्रांसफॉर्मर इज ए स्टैटिक डिवाइस और काइनेटिक डिवाइस। नाउ यू सी दैट entire transformer phenomena is depend upon mutual induction law, and I was told you many times that EMF generation is depend upon n d phi by dt, isn't it now? As I was told many times that EMF is equal with the number of turn into rate of change of flux. So it means what? Without rate of change of flux, you cannot develop the EMF. So it means what? The machine is static, it's true, but there is a rate of change of phenomena. So it means what? It means the machine internal part behave as a kinetic part, kinetic machine, because without any rate of change of flux, you cannot develop the EMF. So my answer is that time is a kinetic machine. So when I just told that is a transformer is a kinetic machine, they are shocked and they're asked why you tell this one. That time I was told them that if you ask me that transformer is a static device or rotating device, I am definitely convinced with your answer, or I am also told you that it's a static device. But if your question is static or rotating, but your question is that static or kinetic, so without any kinetic phenomena, you cannot develop the EMF, because as we know that the mutual induction or the self induction both are depend upon the n d phi by dt. Number of turn is linked with the rate of change of flux. So rate of change of flux means what? The machine is a kinetic here, isn't it now? Yes sir. So that's why the, and देखो मैं ये एग्जांपल क्यों लिया, क्योंकि मैं खुद भी ये एग्जांपल से गया हूँ, तो इसीलिए मैं तुमको बारीक, तुम लोग सभी ट्रांसफॉर्मर का डेफिनेशन जो बोले हो, यू आर एब्सोल्युटली राइट, बट इट डिपेंड अपॉन द सिचुएशन। कोई अगर डेफिनेशन मांगेगा तो डेफिनेशन के हिसाब से ये आंसर आएगा कि ट्रांसफॉर्मर कैन ट्रांसफर द पावर फ्रॉम वन सर्किट टू अनदर सर्किट, है ना। The second point, अगर कोई पूछेगा what is the purpose of the transformer, what is the purpose of the transformer, the purpose of the transformer is very simple. It try to meet up the load demand. As per your load demand, you can change your level, voltage level. If your load demand is high, so automatically you go for the higher voltage. Higher voltage means it's called the step up condition. If your load demand is low, at that condition, machine designed as a step down machine. So it means why we designed that one, because your load demand is low. So if anyone asks you that what is the purpose, you tell me in a single word
तो सिंगल वर्ड सिंगल सेंटेंस में क्या आएगा? दैट ट्रांसफॉर्मर कैन ट्राई मीट अप द लोड डिमांड। अब लोड डिमांड अगर हाई होगा तो ट्रांसफॉर्मर बिकम अ स्टेप अप ट्रांसफॉर्मर। अगर लोड डिमांड लो है so at that time your machine behave as a step down machine or step down transformer. Okay, so now come to the step up condition and the step down condition. Please look at the board, those are the non-electrical background. Definitely I will use some analogy from the mechanical side itself. I use some analogy from mechanical side itself. Please look at the board now. So if you see the transformer, the purpose is that to meet up the load demand. Okay, so now suppose we have the input voltage, suppose 110 volt. Let's consider 110 volt, and my output, the required output is suppose 1 kV. So it means what? You have to step up the voltage. Now, as we know that as per the electromagnetic induction law, E equal to what? E equal to N d phi by dt. Rate of change of flux into number of turns equal to EMF. Suppose if your rate of change of flux is fixed, so it means what? If you increase the number of turns, you can increase your EMF. So suppose we have the 110 volt side and you need to step up your voltage 1 kV. So what you will do? You use suppose two turns here, and we use some multi-turn in the secondary side to meet up the 1 kV. Because your input voltage is low, but the output voltage is high. So we use some high number of turns. So suppose now you see that here we use the 1, 2 turn. 2 is do. Basically, we consider this one also loop. So if we consider this one, so 1, 2, 3, 4, 5. So there is a 5 loop. If you see that there is a 5 loop. Okay. So each and every solenoid structure, this part is called a solenoid structure. So each and every solenoid part is become or behave as a loop. So here we have some 5 loop. Okay, and here we have 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13. So 5 is to 13. Okay, suppose we provide here 110 volt. So automatically what will happen? This voltage will be step up, but what will be your voltage? 110 volt, this one. So suppose we consider this one is a 1 turn, so it comes to 13 by 5. 13 by 5. If suppose we consider this one is 1, so this one will be 13 by 5. Okay, so we apply here 110 volt. So the secondary part will be 110 volt into 13 by 5. Okay, so it comes to 5 to 2. It means 286 volt. है ना? इतना ही आ रहा है। तो जितना आएगा, अगर मेरे कैलकुलेशन में गलती हुआ है तो थोड़ा माफ कर देना। So suppose it comes to 286 volt because we use here number of turns, and as we know that E equal to N d phi by dt. If we increase the number of turns, automatically EMF will be increased. So we use here 5:13 turn, a transformer having 5:13 turn, and we have the input of 110 volt. So automatically we have the output as a 286 volt. Okay. Now suppose we have a 5:13 turn. We have input here 10 volt or 10 volt. Okay, so this one is our input side. Suppose we consider this one is our input side, because as I was told you, each and every electrical network is our bilateral network. So you can swap the input position also. So suppose this one is our input position. So what will be the voltage of here? So we consider this because it's the 5:13 turn, 5:13 turn. So suppose this one is our input. Consider this one is a 1. So it comes to 5/13. Okay. So consider as it's a 13 volt. It should be better for the calculation. So 13 volt. So it means what? Here we get 5/13. 5/13 into 13. So it 13 that will cancel out. This one will be the 5 volt.
So now you see that. Now you see that once you change the input position, your high voltage becomes the low voltage. So depending upon the number of turns, you see that the calculation is very simple. Depending upon the number of turns, we can swap the position. So it means what? Suppose your input is 13 volt and your input is connected in this position in the high number of turns, and you want to output from here itself. So if you put 13 volt supply, you get 5 volt output. So it means what? It behaves as a step down transformer. It behaves as a step down transformer. Now, why it's called a step down transformer? Because the voltage is low. We put here 13 volt. Depending upon the number of turn ratio, 13 volt becomes the 5 volt. So it means if your input is here, it means the primary is this one and this one is our secondary. So the output will be your 5 volt. Now, if you swap the position, it means what? Suppose this one is our primary, this one is our primary input, and if your output here, if you place your output load here, so if you apply the 5 volt here, so automatically depending upon the number of turn, it provide you 13 volt. So you now see that once you change the position due to the bilateral network nature, automatically the voltage position, you see that it will step up. So this condition called the step up condition. So step up means what? Step up means the voltage output is high. Step up transformer criteria is that the output voltage of that particular transformer is high. And step down condition means what? The output voltage from the transformer, is low. So by using single transformer, we can change that particular transformer in its step up condition or step down condition. It means what? If the less number of, please, those of the non-mechanical background, listen carefully. If we connect the primary side with the less number of turn and the output is connected with the high number of turn, the transformer behave like a step up transformer. Okay, step up transformer. If we swap the position, it means the input part. If the input part is connected with the high number of turn and the output we take from the low number of turn, it behaves as a step down transformer. So please, those are the non-electrical background, please draw this diagram. Okay. Suppose we consider same example. Okay, 1, 2, 3, 4, 5, and this part is connected with the input part. Okay, now 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13. So it means what? It's a ratio of 5:13. So this one is our N1, this one is our N2. N1 is our primary side and N2 is our secondary side. Okay. So 5:13. This one is our output side. So suppose input side means, suppose we provide here 5 volt supply, it offer you 13 volt. Okay, so it means what? It means N2 is greater than N1, so E2 is greater than E1. It's called the step up condition. सर जी उसको थोड़ा सा ऊपर लिखिए ना, नहीं दिख रहा। नहीं दिख रहा।
So now you see that this one is our N1 is to N2, and your N2 is greater than N1. So we can conclude that E2 greater than E1. It's called a step up transformer. So in case of step up transformer, the output side or the secondary side is connected with the high number of turn. High number of turn is called the secondary side. High number of turn is connected with the secondary side. It's called the step up transformer. Now take another example. Same thing. Suppose 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Okay. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15. Okay. So 15 turn means suppose each and every turn have 1 volt. So suppose this one is our primary side. This one is our input side. Input means the primary side, and if we apply the 15 volt supply here, 15 volt supply, so automatically this one is our N1. Suppose the primary side always defined by the N1. Okay, so this one will be your N2 is to N1. N1 is our primary side. 1 means primary, 2 means secondary. Secondary have your N1 is our 15 turn, and this one is our 7 turn. Okay, so if we provide the input here with the 15 volt, the output will be 7 volt. So automatically you see that 15 volt, this one is our secondary, or output. So 15 volt becomes 7 volt. So it's called the step down transformer. So step up means what? The output voltage will be high in respect of the primary voltage, and step down transformer means what? The your input voltage will be high and the output voltage will be the low. Okay, so step down transformer is clear to you, and step up transformer is clear to you. I think so. Now come to your voltage isolation transformer. There is another transformer called the voltage isolation transformer. The voltage isolation transformer is have N1 and N2 is equal to 1:1 transformer. 1:1 transformer. The voltage isolation transformer is our, suppose this one is 1, 2, 3, 4, 5, 6. So in case of voltage isolation transformer, in case of, suppose you see that 1, 2, 3, 4, 5, and the 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 5, 6, 7. So in that case, in case of voltage isolation transformer, your number of turn will be 1:1. That particular voltage isolation transformer used in a electronic circuit. In electronic circuit, we use the voltage isolation transformer, because in case of electronics device, if you operate each and any electrical device, today we use some electronics device, background of your electrical device. It means to operate any electrical equipment, we use some electrical signal. So now, if you connect the electronics device with the electrical device, the low voltage in electronics device, so automatically power will be flow in reverse direction. So you need to isolate the electronics device as well as the electrical device. So for that isolation purpose, we use the 1:1 transformer. That 1:1 transformer called the voltage isolation transformer. It is used in a electronic signal or communication system. Otherwise, in general view, we use that step up condition and the step down condition. So if the output is connected with the high number of turn, it's called the step up. If your output is connected with the less number of turn, it's called the step down transformer. Now, सर एक बार फिर से बताइएगा 1:1 वाले का. अच्छा, उन्हें क्यों यूज किया गया? वोल्टेज आइसोलेशन ट्रांसफार्मर कहते हैं. वोल्टेज आइसोलेशन ट्रांसफार्मर मतलब जानते हो, जैसे कि मान लो हम लोग कोई भी इलेक्ट्रॉनिक सिग्नल से एक मोटर को ऑपरेट कर रहे हैं.
मान लो मोटर का रेटिंग 15 किलोवाट है, अब वो मोटर को हम लोग कोई सिग्नल भेज रहे हैं, वो सिग्नल के थ्रू वो ऑपरेट हो रहा है। तो सिग्नल जो तुम भेज रहे हो वो क्या होता है, मैक्स टू मैक्स 12 वोल्ट या 13 वोल्ट, ठीक है ना, 12 वोल्ट 13 वोल्ट या 20 वोल्ट। अब देखो अगर वही इलेक्ट्रॉनिक्स डिवाइस को डायरेक्टली मोटर का इनपुट से अगर कनेक्ट कर दोगे तो मोटर का रेटिंग क्या है, हाई वोल्टेज, और तुम्हारा इलेक्ट्रॉनिक्स डिवाइस का रेटिंग क्या है, लो वोल्टेज। तो कभी भी तुम्हारा पावर कभी भी इलेक्ट्रॉनिक सर्किट से इलेक्ट्रिकल सर्किट में मूव ही नहीं कर पाएगा, ठीक है ना। तो इसीलिए हम लोग वी नीड टू सेपरेट, इलेक्ट्रिकली सेपरेट। तो इलेक्ट्रिकल सेपरेशन के लिए, बिकॉज ट्रांसफॉर्मर यूज्ड टू मैग्नेटिकली कपल्ड एंड इलेक्ट्रिकली आइसोलेटेड। ट्रांसफॉर्मर का बेसिक फंडा यही होता है, ट्रांसफॉर्मर कैन transformers are the electrically isolated device but magnetically coupled। तो अगर इलेक्ट्रिकली कपल्ड कर देंगे इलेक्ट्रॉनिक्स डिवाइस को और इलेक्ट्रिकल डिवाइस को, तो इलेक्ट्रॉनिक्स डिवाइस हैव सम लो वोल्टेज और इलेक्ट्रिकल जो डिवाइस है वो हाई वोल्टेज है, तो लो वोल्टेज से हाई वोल्टेज तक पावर कभी फ्लो ही नहीं कर पाएगा। So for that reason we use to separate both of them। So for that reason we use a voltage isolation transformer to produce the proper pulse and not only that to operate the machine also। तो voltage isolation transformer जो होता है वो क्या करता है, सिर्फ और सिर्फ इलेक्ट्रिकल जो तुम्हारा कनेक्शन है उसको आइसोलेट कर देता है, बट मैग्नेटिकली कपल्ड रखता है और पावर को फ्लो करने में हेल्प करता है, ठीक है ना। तो ये तुम्हारा इलेक्ट्रॉनिक्स डिवाइस के लिए यूज करते हैं हम लोग, बट इन जनरल व्यू में हम लोग यूज करते हैं स्टेप अप एंड स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर, ठीक है सर हमने ट्रांसफार्मर में हाँ। नंबर ऑफ टर्न फिक्स कर दिया, तो सर जब लोड डिमांड वेरी करेगा तो सर उससे हम मीटअप कैसे करेंगे सर? थोड़ा जोर से बोलो ना। सर हमने ट्रांसफार्मर में नंबर ऑफ जो टर्न थे कॉइल में उसको हाँ। फिक्स कर दिया, फिर जब सर लोड डिमांड वेरी करेगा तो सर उससे मीटअप करने के लिए सर हम कैसे करेंगे फिर? हाँ एकदम सही क्वेश्चन। हाँ हो सकता है कि मेरा लोड डिमांड वेरी कर रहा है, जैसे कि मेरा 220 केवी का मान लो आउटपुट है, 220 केवी का, मान लो किसी को देख लेते हैं ना, ये 5 वोल्ट है, ये 13 वोल्ट है, ठीक है ना। अब देखो ना क्या बोला जाता है, 13 वोल्ट का प्लस माइनस 10% वेरिएशन अलाउबल है। तो ये जो कंडक्टर हम लोग यूज करेंगे, कॉइल जो यूज करेंगे वो प्लस माइनस 10% को बेयर कर सकता है, क्योंकि एज पर इंडियन इलेक्ट्रिसिटी रूल आईईसी 639 को देखोगे, एज पर आईईसी 639 ये बोल रहा है क्या कि जो भी मेरा आउटपुट वोल्टेज होगा वो 10% वेरिएबल होगा, और ये 10% वेरिएशन को आपको ये वाइंडिंग के थ्रू मेकअप करना पड़ेगा, ठीक है ना। अगर मेकअप नहीं कर पा रहा है तो एट दैट कंडीशन वी यूज टैप चेंजर, वी यूज द टैप चेंजर। ये टैप चेंजर दो टाइप का होता है, on load tap changer or off load tap changer, both are the OLTC, on load tap changer, off load tap changer। By taking the help from the tap changer you can build up your voltage, but 10% variation is allowable, so your winding property is defined in respect of 10%. The winding also can tolerate the 10% variation, but if you have some high variation at that time we use some tap changer, by using tap changer we can meet up that one। So for that time the tap changer takes plays the vital role, ठीक है। प्लस माइनस 10% ना। हाँ प्लस माइनस 10% हम लोग वेरिएशन अलाउ करते हैं। जैसे क्या होता है कि बेसिकली अगर देखेंगे जो वोल्टेज होता है ना वो प्लस माइनस 6% होता है, और जो फ्रीक्वेंसी होता है प्लस माइनस 10% अलाउबल है एज पर आईईसी 639, ठीक है ना। अब ये 6% जो होता है विदाउट हार्मोनिक्स होता है, विदाउट हार्मोनिक्स, सो वी जस्ट कंसीडर इट एज ए 6%। 6% जो होता है वो रियल वैल्यू होता है, फ्रीक्वेंसी 10% अलाउबल है, इसके नीचे हम लोग जा ही नहीं सकते हैं। ये एज पर आईईसी रूल इंडियन इलेक्ट्रिसिटी कोड के अनुसार वोल्टेज को प्लस माइनस 6%, फ्रीक्वेंसी को प्लस माइनस 10% एंड ओवरऑल वेरिएशन 10% को हम लोग फिक्स करके रखते हैं, ओवरऑल वेरिएशन 10%। So your winding also designed in a such a way that it can bear that 10% variation, okay।
इट्स अ आईईसी रूल, इंडियन इलेक्ट्रिसिटी कोड जो होता है ना, उसके हिसाब से आता है। ठीक है ना। अब हम लोग दूसरे पॉइंट में आते हैं। प्लीज नोट डाउन दिस वन आल्सो, दोस आर द नॉन इलेक्ट्रिकल बैकग्राउंड। सो नाउ यू सी दैट in case of transformer, that the if you see the main transformer, that is your step up or step down transformer, in that case the transformer can transfer the power. Please be concentrate here, please be concentrate here, that transformer can transfer the power from one circuit to another circuit. Okay, one circuit to another circuit. Remember one thing, that power is constant. Power is constant. Okay, power is constant means what? Now you see that here we have less number of turn. Okay, so suppose it has some V1 voltage. V1 5 volt is the primary side, 1 means the primary, so V1, this one is the secondary, named as a V2. So transformer can transfer the power, mind it, transformer can transfer the power from one point to another point, and we all know that power equal to what? V into I. Power equal to what? V into I. For a single phase, for a single phase, for 3 phase it should be 3 VI cos phi, sorry 3 VI है ना, cos phi तो बाद में बताएंगे हम लोग, अभी बाद में देखा जाएगा। तो √3 VI और 3 VI. If we consider the line voltage, it should be your √3 VL. If we consider the phase voltage, it will be your 3 VI. The both are deals with your 3-phase system, but for the single phase, the power equal to VI. Mind it. Calculation अगर याद नहीं भी आता है, those are the non-electrical background. याद रखो हमेशा that for the single phase, power equal to V into I. For the 3 phase, it will be √3 VLIL. L stands for line, L stands for line, और PH stands for the phase. अच्छा, तो मैं जैसे पहले बताया था that line voltage means what? The voltage between two line. Two line मतलब R एक फेज जा रहा है, Y फेज जा रहा है, R जा रहा है, R Y B, तो ये R Y के बीच में जो वोल्टेज आएगा, that should be your line voltage. But once you measure the voltage, in respect of neutral, it should be your phase voltage. Okay, so if we consider the line voltage and the line current, that will be your √3 VLIL. √3 VLIL is your power. But definitely there should be some cos phi, sin phi. That is another issue. But that entire part is deals with the power factor. Later on we will discuss about it. But the magnitude of the power for the 3 phase equal to √3 VLIL. If we consider the phase current and phase voltage, phase voltage and phase current, it means what? Phase means what? Phase means that particular voltage we get from one phase with one neutral. It means what? Suppose we put one voltmeter terminal in a phase and another voltmeter terminal in neutral, you get the phase voltage. So in that situation we have 3 V phase, I phase. So in case of 3 phase, the magnitude of the power is √3 VLIL and V phase, I phase, and for the single phase it should be VI. Okay, now come to the next point. Please look at here. So the primary side voltage is V1 and the second primary side current is I1. Let's consider the primary side voltage is V1 and the primary side current is I1, and the secondary side voltage is V2 and the secondary current is I2. Okay, so here we have power P1 and here we have power P2. So as per the transformer phenomena, P1 equal to P2. It means what? It means that power is same. In both cases, power is same. Please remember it. Those are the non-electrical background. Please remember this one. That power in both coils is same. So P1 equal to P2. So P1 equal to P2 means what? Transformer can transfer the power from one point to another point.
keeping the power is same. So P1 equal to P2. So we can write that P1 equal to V1 I1 and P2 equal to V2 I2. Okay. P1 equal to V1 I1 and P2 equal to V2 I2. Suppose if you see here that V1 by V2 equal to your I2 by I1. I2 by I1. Please look at the board. Now, as per the step up condition, please be concentrate. As per the step up condition, please look at the board. As per the step up condition, V2, as I was told you, in case of step up, what it means? It means the load voltage will be high. In respect of primary voltage. So V2 is greater than V1. So what will happen in case of current? Definitely it should be your what? It should be your, if your V2 is higher than V1, so automatically I2 is lower than I1. As you know that if your V2 is greater than V1, so it means what? I1 is greater than I2 as per the equation. So it means what? In case of step up voltage transformer, the output voltage is step up, but the current will be step down. So it means what? As per step up condition, voltage will be step up. Please look at the board. Voltage will be step up, but current is step down. Because why it happened? Because in both case power is constant. So if your power is constant, as we know that power equal to V into I, so suppose we can consider that P by I equal to V. Okay, so if your V is high, so current will be low because it's inversely proportional. So V is high, so current is low. So step up condition means what? Step up condition means we get the current low, step down. As like your, if you see your mechanical analogy, as like your gear system. If you see your gear now, please look at the board. Those are the mechanical background. Suppose we consider two gears. This one is connected with this one. Okay. So suppose, and as we know that mechanical power equal to what? Mechanical power equal to rotation into torque, omega into torque. As we know that omega into torque, and again we know that torque equal to what? Force into distance. So now you see that this is a bigger ball, A gear, this one B gear. So A gear distance is high. So definitely distance, if it has high distance, so torque A and torque A is greater than torque B. So if the torque A greater than torque B, so automatically we can conclude that omega A less than omega B. Because if you see your gear system, mechanical power is constant. So mechanical power for the smaller ball is a bigger ball is a PMA or P mechanical power B. So P mechanical power A equal to rotation speed omega A tau A, and the mechanical power B is omega B into tau B. So now you see that omega A is equal by omega B equal to tau B by tau A. Okay, now you see that if your tau A is greater than tau B, automatically we can conclude that omega A is less than omega B. So it's a similar analogy. As like your mechanical system, it's a similar analogy we use in a transformer. So it's a very simple concept. Because if you see your mechanical system, the gear have equal mechanical power. To maintain the equal mechanical power, if you increase the torque, automatically rotational speed will be decreased.
Is there any doubt? No, sir. So those are the mechanical background. Please reply me. I need your reply. Yes, sir. Yes, sir. It's similar like your gear. You see that this one gear, this is your transformer, this is your transformer. Same thing. In case of Yes, sir. gear, mechanical power deals with your omega into torque. Our electrical power, it deals with the voltage into current. So if in case of your mechanical system, if your torque is high, if the body have a high torque, rotational speed will be low. In similar fashion, in case of electrical side also, if the machine have a high voltage, to maintain the electrical power constant, current will goes down. Okay? Yes, sir. Yes. So if anyone asks you, those are the mechanical background, please reply me that in case of step up transformer, what will be the value of current? Is high or low? Low. Low. sir. I need the reply from the mechanical side only. Low. Low, sir, current. Low, sir, low. So it's clear now. If anyone asks you, अगर mechanical से आप हो ना, so what will be the analogy? What will be the analogy of the transformer in your domain? You just simply reply that like our gear, sir, like our gear system. Because in case of gear also, we maintain the mechanical power constant. So if you see the gear system, the mechanical power is related with the omega into torque. So if your torque is high, rotational speed will be low. In similar fashion, in case of transformer also, if your voltage is high, current will be low. So transformer is the analogy of, transformer is a similar analogy of your mechanical gear system. So the point is clear to you? Yes, sir. Yes. Yes, sir. Okay, so it means what? So it means what? If you see in case of electrical system also, power will be constant. So power will be constant in both cases. So if we have high voltage, so we get the low current as per the power conservation phenomena. So this is the main concept. So if you see in case of transformer, power is constant. This is the vital point or key point for a transformer. It's a key point of a transformer. So in case of transformer, power is constant. Transformer works or accomplished its work by means of mutual induction, okay. Third point is a very vital point. In case of transformer, frequency is constant. Later on, I will discuss about that frequency also. Frequency is constant. So please note down these 3 points. Power is constant. Depending upon constant power, we can change the voltage current accordingly. The entire work accomplished by the mutual induction. And in case of transformer, frequency is constant. Why we keep the frequency constant? Later on I will discuss with you. Just the next slide we have this one. So we discuss about that frequency is constant. Why we keep the frequency is constant. So transformer, the first point. So this 3 is the vital point. So if you see the transformer has no rotating part inside it. No rotating part inside it. So transformer is a static device. Static device. It's the static device. Now you see that transformer is a static device. Okay? It works. Yes. It works under mutual induction, keeping frequency and power constant. That is the general definition of the transformer. So there is a 3 definition of the transformer. If anyone asks you the appropriate definition of the transformer, sir, transformer can transfer the power one circuit to another circuit.
those who mentioned that circuit term ना, you are absolutely right, very good answer, है ना? ऐसे ही आंसर देते रहो तो बहुत अच्छा सीखोगे, very good, है ना? तो पहला पॉइंट अगर कोई पूछेगा कि what is the main definition of the transformer, sir, transformer can transfer the power from one point to another point, one circuit to another circuit, okay, over. What is the purpose of the transformer? If anyone asks you the what is the purpose of the transformer, sir, by using transformer we can meet up the load demand. जैसे वो पूछेगा ना, क्योंकि मैं क्यों ऐसे पढ़ा रहा हूँ पता है, जब तुम इंटरव्यू के लिए जाओगे ना, तुम लोग को सिखाना पड़ेगा ना, तो प्लीज थोड़ा सुनो ना मेरा बात, मैं इसीलिए इतना रिक्वेस्ट करता हूँ, जब भी तुम इंटरव्यू देने जाओगे ना, तो जो इंटरव्यू लेता है ना भाई, वो क्या करता है पता है, देखो मैं तुम्हारा एकदम रेगुलर टीचर हूँ, इसलिए मैं तुमको इतना अच्छे से बात बताता हूँ, जो भी इंटरव्यू ले रहा है ना, वो हमेशा कोशिश करता है कि अपने डोमेन में स्टूडेंट को रखूंगा ताकि वो मेरे डोमेन में आके आंसर करे, बट इट्स योर ड्यूटी टू अट्रैक्ट दैट इंटरव्यूअर टुवर्ड्स यू। तो अगर आप ऐसे आंसर दोगे ना, तो वो अट्रैक्ट होने में मजबूर हो जाएगा। क्यों जानते हो? जैसे तुम आंसर दोगे ना कि सर ट्रांसफार्मर, वी यूज द ट्रांसफार्मर टू मीट अप द लोड डिमांड, तो सबसे पहला क्वेश्चन जैसे तुम लोग का मन में भी आया था जब मैं पढ़ा रहा था, व्हाई what is the meaning of the meet up the load demand, तब तुम बताना meet up the load demand मतलब थोड़ा सा पिक्चर ड्रॉ करोगे, ड्रॉ करके बताओगे कि सर स्टेप अप और स्टेप डाउन as per the requirement of the load we can use the transformer। इससे क्या होता है जानते हो? इससे ये होता है कि तुम अपना डोमेन में उसको खींच के ला सकते हो। तो ये सब चीज ना थोड़ा सीखना पड़ेगा जब तुम इंटरव्यू के लिए जाओगे, ठीक है? तो ये पॉइंट आया। थर्ड पॉइंट, अगर कोई पूछेगा कि जनरल डेफिनेशन ऑफ द ट्रांसफार्मर क्या होता है, तो जनरल डेफिनेशन देखो ये चारों पॉइंट से लाएगा, इसके लिए इंग्लिश फिंग्लिश का जरूरत नहीं है, खुद इंग्लिश बोल सकते हो। मैं इसीलिए बोलता हूँ ना, कॉन्सेप्चुअली आंसर करोगे ना तो इंग्लिश ऐसे ही आ जाएगा। जैसे ट्रांसफार्मर इज ए स्टैटिक डिवाइस, सर, स्टैटिक डिवाइस, इट वर्क अंडर द म्यूचुअल इंडक्शन कीपिंग पावर एंड फ्रीक्वेंसी कांस्टेंट। हो गया, देख लो, कोई भी बुक देख लो, कोई भी नेट देख लो, यही आंसर दिया हुआ है। तो मैं इसीलिए बोल रहा हूं ना, थोड़ा सा स्पेसिफिक बनो और टू द पॉइंट अपने आप को मोल्ड आउट करो ताकि पॉइंट तुमको समझ में आए। अच्छा, कोई डाउट है? कोई डाउट है? नो सर। नो सर। अरे समझ में आ रहा है ना? मैं ये बेकार ना बता रहा हूँ। आ रहा है सर, आ रहा है, समझ में आ रहा है सर। मतलब एकदम खराब नहीं लग रहा है ना? सर बहुत अच्छा लग रहा है। नहीं, कुछ रिस्पॉन्ड नहीं कर रहे हो यार। मतलब क्या है कि ना, होता है, ये मेरे साथ भी होता था ना, जो मेरा घर का टीचर बाहर से आएगा तो उसका इम्पोर्टेंस बहुत हाई है, और ये अंदर का ही है तो इसका इम्पोर्टेंस क्या है यार, छोड़ो इसको। ऐसा नहीं है, मैं तुमको जो भी चीज बता रहा हूँ ना, ये सब चीज तुम लोग खुद फेस करोगे, और मैकेनिकल इलेक्ट्रिकल नहीं है। क्यों बता रहा हूँ? ट्रांसफार्मर मैकेनिकल को ही पूछा जाता है, क्योंकि जो लोग प्लांट में काम करते हैं वो लोग जानते हैं कि ट्रांसफार्मर इज इक्वल विद द मैकेनिकल गियर सिस्टम। तो गियर का अगर कॉन्सेप्ट तुम्हारे पास है तो ट्रांसफार्मर का कॉन्सेप्ट भी तुमको लाना पड़ेगा। तो हम लोग आते हैं, जैसे कि नीड ऑफ ट्रांसफार्मर सब कुछ हो गया है। अच्छा देखो, जो भी ट्रांसफार्मर स्टेप आउट स्टेप डाउन का जो कॉन्सेप्ट हम बताए थे, सेम चीज अभी देखो। जैसे इफ यू सी दैट लोअर जो तुम्हारा गियर है, छोटा गियर है, दैट इज इक्वल विथ योर लेस नंबर ऑफ टर्न, and the जो larger gear है is equivalent to the your the large number of turn. So it means if you see that there is a phenomenon like that, for the smaller number of turn we use the small gear, and the large number of turn we use the larger side gear. Okay, सर जब हम एक्सक्यूज मी सर जब हम स्टेप अप ट्रांसफार्मर यूज कर रहे हैं, मतलब वोल्टेज को स्टेप अप कर रहे हैं, तो हमारा वहां पर I² R लॉस भी बहुत कम हो जा रहा है। तो ये भी एक फायदा रख के हमने इस प्रोसेसर को यूज किया था क्या? जैसे अगर हम ट्रांसमिट करते हैं तो मैं इसको डिस्कस करूंगा, प्लीज रुक जाओ। एकदम एप्रोप्रिएट आंसर है,
ये आंसर जो तुम दिए हो ना, आंसर तो तुम राइट दिए हो, बट Yes, sir. तुमको ना क्वेश्चन भी पता होना चाहिए। मैं तुमको ये इसका रिजल्ट और रिलेवेंट क्वेश्चन तुमको अभी पूछूंगा, अभी पढ़ाऊंगा। प्लीज थोड़ा रुक जाओ। एकदम राइट बोले हो, एकदम राइट बोले हो, थोड़ा सा रुक जाओ, क्योंकि अगर क्वेश्चन पता नहीं रहेगा ना तो तुम कहीं पे भी ये वर्ड बोल दोगे, और ये सबसे बड़ा प्रॉब्लम का बात होता है। ठीक है ना। अभी आते हैं नीड ऑफ ट्रांसफार्मर। देखो देखो देखो, तुम जो बोले हो उसी चीज को डिस्कस करेंगे। अब वही पॉइंट के लिए हम लोग बात करने के लिए सोचे थे, और तुम बता दिए पूरा क्वेश्चन को। वेरी गुड आंसर। अब देखो क्वेश्चन क्या आता है, इसके बाद ना ट्रांसफार्मर से कोई भी इंटरव्यू देने जाओगे ना तो एक क्वेश्चन पूछा जाता है। क्वेश्चन इज दैट सपोज we have a generator here. Suppose for the JPL it's a 250 megawatt generator. Okay, 250 megawatt generator means 16.5 kV generator. Okay, 16.5 kV generator is connected. There is a grid, and the grid is rated as a 220 kV or 400 kV. है ना, 220 kV or 400 kV. Okay, so we use a transformer. Please look at the board. That this is a symbol of the transformer. Okay, it's a zigzag line is a symbol of the transformer. So it's a single line diagram. In case of single line diagram, we use that zigzag line. It's a symbol of the transformer. So this transformer is called the GT transformer, or the GT is equal with the generating transformer. Please note down this one, generating transformer. एक चीज मैं बोलना चाहता हूं, याद रखो, ये यूनिवर्सल ट्रूथ है, एकदम अच्छा से याद रखो। दुनिया में जितना भी ट्रांसफार्मर है, जहां पे भी जो भी लगा हुआ है, एक्सेप्ट जीटी, ऑल आर द स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर। एक्सेप्ट जनरेटिंग ट्रांसफार्मर, ऑल आर द स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर। व्हाई? बिकॉज generating transformer is connected with the grid only. Okay, and our grid voltage is always either 220 kV or 400 kV. There is a three type of grid voltage in India. One is our 220 kV grid, 220 kV grid, number 2 400 kV grid, and number 3 765 kV grid. In India we use these three type of grid. In JPL we use 220 and 400 kV grid. In the power grid we use the 765 kV of the grid. Okay, so basically in the Indian culture, in the electricity culture, we use these three type of kV grid. Okay, so now you see that the 250 megawatt, 600 megawatt, 800 megawatt, if you go some extent of 800 megawatt also, it generates around 30 kV, around 30 kV. Okay, so if you connect the generator to your grid, you need a step up transformer. So the generating transformer is the only one transformer which is used for the step up purpose. बाकी all are the step down transformer. तो अभी ना एक क्वेश्चन पूछा जाता है, ये तो तुमको हम लोग पढ़ा देंगे, तुम लोग सीख जाओगे, ठीक है। क्वेश्चन ये आता है कि why we require the step up transformer in the your in the generating transformer. It means why the generating transformer is behave as a or is like as a your step up transformer. Why we require the step up transformer with the generator. तो इसका आंसर क्या आएगा? Because as we know that generating transformer is a step up transformer. But ये अगर क्वेश्चन पूछा जाएगा कि जनरेटिंग ट्रांसफार्मर को या जनरेटिंग ट्रांसफार्मर क्यों स्टेप अप ट्रांसफार्मर होता है, पहला क्वेश्चन, या स्टेप अप ट्रांसफार्मर हम लोग क्यों लगाते हैं आफ्टर जनरेटर, तो आंसर उसको ऐसे देना है कि सर दैट जीटी, दैट जनरेटिंग ट्रांसफार्मर इज कनेक्टेड विद द ग्रिड. Okay, connected with the grid. Please be concentrate. The generating transformer is connected with the grid, and as we know, sir, as we know that in electrical system now there is a one variable law. There is a one variable law. Electrical system में सिर्फ एक ही variable loss होता है. That is your heat loss. That is your heat loss or I square R loss. इलेक्ट्रिकल सिस्टम में वेरिएबल लॉस एक ही होता है जो कि I square loss और heat loss.
तो सर आप देखिए, नाउ यू सी दैट सर इन केस ऑफ जीटी इट्स अ स्टेप अप ट्रांसफार्मर, so as we know that na sir ki power equal to √3 v into I. Okay, so now for the step up purpose means what? Step up purpose means √3 I equal to v. We can conclude like this way. So step up transformer means what sir? It's have high voltage, it's have high voltage, so automatically current will be low, because we all know that sir na, in case of transformer power is constant. So if your power is constant, if you increase the voltage, automatically current will be low. So sir, if we have a low current, so I square R loss, due to less amount of current, I square R loss of bit loss will be low. So it means what? If your loss is low, so automatically sir, efficiency equal to, we know that output by input sir, output by input, and output equal to what sir? Input minus loss by input. If your loss term is low, loss term is tends to 0, your efficiency goes to high. तो क्लियर आंसर देना है एकदम। तुम ना एकदम ऐसा मत बोल देना सर आई स्क्वायर आर लॉस को मिनिमाइज करने के लिए कर रहे हैं, क्यों बोलो तो तुम जितना शॉर्ट में अपना बात बोल दोगे उनको मौका मिल जाएगा दूसरा क्वेश्चन पूछने के लिए। तो तुमको अपने आप में इतना काबिल बनाना है ताकि वो सामने वाला तुम्हारा ही पॉइंट में वो लूप में घूमता रहे, तुम्हारा ही पॉइंट में वो घूमता रहे। तो पॉइंट को तुमको ऐसे फोल्ड आउट करना है, और एकदम जो बंदा ने अभी इसको पूछा था या आंसर एप्रोप्रिएट आंसर दिया था वो एकदम राइट है। क्यों राइट है? क्योंकि ये क्वेश्चन बहुत बार पूछा गया है, और ये क्वेश्चन पूछा भी जाता है कि व्हाई वी यूज स्टेप अप ट्रांसफार्मर इन जनरेटिंग ट्रांसफार्मर, व्हाई द जनरेटिंग ट्रांसफार्मर गिव एज अ स्टेप अप ट्रांसफार्मर। क्यों हम लोग जनरेटिंग ट्रांसफार्मर को स्टेप अप ट्रांसफार्मर बनाते हैं, या हम लोग क्यों स्टेप अप ट्रांसफार्मर ही यूज करते हैं एज ए जनरेटिंग ट्रांसफार्मर। तो ये क्वेश्चन ना बहुत बार पूछा गया है, और ये क्वेश्चन तुमको इलेक्ट्रिकल बैकग्राउंड से हो या तुम मैकेनिकल बैकग्राउंड से हो, इट डजंट मैटर, ये क्वेश्चन तुमको पूछा जाएगा ही जाएगा, ये सब क्वेश्चन, ठीक है ना। तो ये चीज को थोड़ा ध्यान में रखना, तो इसको ऐसे एग्जांपल देना सर, एज यू नो दैट जनरेटिंग ट्रांसफार्मर में क्या होता है, पावर कांस्टेंट होता है सर। तो पावर कांस्टेंट, अब पूछेंगे कि पावर कांस्टेंट कहां पे होता है सर, पावर कांस्टेंट मतलब प्राइमरी साइड और सेकेंडरी साइड में पावर कांस्टेंट होता है। एज लाइक सर गियर में क्या होता है, वही सब सेम चीज पावर कांस्टेंट होता है। तो अगर सर पावर अगर ये होगा तो पावर इक्वल टू हम लोग क्या जानते हैं थ्री फेज सिस्टम के लिए √3 v into I, तो Vp by √3I इक्वल टू V, तो पावर तो कांस्टेंट है सर, तो V अगर बढ़ेगा एज पर द स्टेप ऑफ नेचर, V अगर बढ़ेगा तो करंट घटेगा, तो सर हम लोग जानते हैं इलेक्ट्रिकल सिस्टम में सर एक ही लॉस होता है जिसको हम लोग वेरिएबल लॉस कहते हैं। लॉस तो बहुत होता है, बट जो वेरिएबल लॉस होता है, जो मेन लॉस होता है, वो क्या होता है, आई स्क्वायर आर लॉस सर, वो क्या होता है, आई स्क्वायर आर लॉस। तो जैसे ही हम लोग वोल्टेज को बढ़ा दिए तो ऑटोमेटिकली करंट घट गया, तो आई स्क्वायर आर लॉस सब क्या होगा, मिनिमाइज हो जाएगा। आई स्क्वायर आर लॉस सर क्या होता है, हीट लॉस होता है। अभी सर हम लोग क्या जानते हैं, एफिशिएंसी इक्वल टू आउटपुट बाय इनपुट, आउटपुट इक्वल टू क्या होता है सर, इनपुट माइनस लॉस बाय इनपुट। सो अगर मेरा आई स्क्वायर आर लॉस, हीट लॉस अगर घट गया तो सर एफिशिएंसी क्या होगा, बढ़ जाएगा। तो मतलब देखो अब इससे ना और एक आंसर हो जाता है, और एक आंसर क्यों बोलो तो, तुम जैसे ही बोलोगे ना कि अच्छा तो स्टेप अप ट्रांसफार्मर लगा के हम लोग क्या किए, हम लोग आई स्क्वायर आर लॉस को मिनिमाइज कर दिए, तुरंत वो क्वेश्चन कर सकता है कि मेरा अगर स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर लगा था तो क्या होगा। तो कंट्रोवर्सी में या आर्गुमेंट में तुमको क्यों जाना है, तुम ऐसे आंसर दो ताकि वो पहले से ही पूरा प्लीज्ड हो और तुम्हारा कंप्लीट आंसर हो। देखो इसके बाद आपको कहीं पे जाना नहीं है, क्यों, पहला पॉइंट तुम इक्वेशन में तुम समझाए उनको, इक्वेशन के बाद तुम लॉस के बारे में गए, लॉस के बारे में सिस्टम एफिशिएंसी में चले गए। अरे तुम लोग सभी जानते हो, जो लोग इलेक्ट्रिकल से हो, मैकेनिकल से हो, अल्टीमेटली हम लोग का फोकस क्या रहता है, एफिशिएंसी। तुम कुछ भी कर लो, अल्टीमेटली मेन एजेंडा विल बी योर एनहेंसमेंट ऑफ एफिशिएंसी। तो एनहेंसमेंट ऑफ एफिशिएंसी में हम लोग जाके खत्म कर दिए, तो योर आंसर विल बी एप्रोप्रिएट। बोलो किसको डाउट है। एंड सर अगर मतलब इंटरव्यूअर इस क्वेश्चन पे जाता है कि हम बाद में जो स्टेप डाउन यूज करते हुए चलते हैं
तो फिर उसका आंसर ये होगा, क्योंकि हमें फिर आगे जो हाउस होल्ड में आई स्क्वायर आर हमारा हेल्प करता है, जैसे बल्ब को ग्लो करना, जो आपने उस दिन बताया था, हाँ तो हाँ, उसका एकदम सही अप्रोप्रिएट बात। आंसर क्या रहेगा सर? यही रहेगा या फिर और कुछ उसको टेक्निकली हम कर सकते हैं? नहीं, टेक्निकल यूज यही है, क्योंकि जो भी हम लोग हाउस होल्ड के लिए यूज करते हैं ना, तुम देखो ना, जो भी हम लोग लाइट ग्लो कराते हैं या कुछ वर्क डन कराते हैं, वर्क डन क्या होता है? कोई भी एनर्जी का ट्रांसफॉर्मेशन। तो हम लोग क्या करते हैं, इलेक्ट्रिकल जो एनर्जी जो हम लोग का कंजम्पशन हो रहा है ना, वही कंजम्पशन एनर्जी क्या होता है, इन टर्म ऑफ वर्क डन हम लोग को रिटर्न मिलता है ना। जैसे कि हम लोग अगर स्विच यार्ड, जैसे कि हम लोग ये आपका जनरेटिंग ट्रांसफार्मर में जाओगे या आपका ग्रिड में जाओगे, उसमें हम लोग को वर्क डन नहीं करना है, उसमें हम लोग को पावर को एक पॉइंट से तुम्हारा घर तक पहुंचाना है। तो उसमें हम लोग को वर्क डन नहीं चाहिए। तो वर्क डन नहीं चाहिए तो हमको सिर्फ क्या है, पावर को सिर्फ कैरी करके ले जाना है। तो उसमें हम लोग कोशिश यही करेंगे कि लॉस मिनिमाइज हो। और हम लोग क्या करते हैं, डिस्ट्रीब्यूशन एंड में हम लोग क्या करते हैं, वही जैसे कि देखो ना, एक बल्ब ग्लो करता है। बल्ब कैसे ग्लो करता है? वो हीट एनर्जी जो आता है हमको, वो कहां से आ रहा है? वो ड्यू टू आई स्क्वायर आर होता है। जैसे फिलामेंट को देखेंगे, फिलामेंट का रेजिस्टेंस क्या होता है? बहुत लो होता है ना। रेजिस्टेंस लो होगा या हाई होगा, उसका क्रॉस सेक्शन एरिया छोटा कर देते हैं, तो आर बढ़ जाता है। तो करंट तुम्हारा आ रहा है, ऊपर से तुम आर को भी बढ़ा रहे हो। मतलब जो फिलामेंट, बल्ब में जो फिलामेंट यूज करते हैं, तो हम लोग को हाई आई स्क्वायर आर लॉस चाहिए। हाई आई स्क्वायर आर लॉस क्या करेगा? हीट डेवलप करेगा। तो उसको डेवलप करने के लिए हमको क्या चाहिए? करंट भी चाहिए। ऊपर से अगर रेजिस्टेंस को भी बढ़ा देते हैं तो आई स्क्वायर आर का वैल्यू क्या होगा? और बढ़ जाएगा, है कि नहीं? तो हम लोग जितना भी हम लोग चीज यूज करते हैं ना हाउस होल्ड पर्पस में, वो इन टर्म ऑफ आई स्क्वायर आर ही हम लोग यूज करते हैं। ठीक है, अभी थोड़ा सा पावर ट्रांसफार्मर के बारे में बता देते हैं। थोड़ा सा पावर ट्रांसफार्मर में ना एक चीज पूछा जाता है। देखो मैं इसको ना इसीलिए ऐसे डिजाइन भी किया हूं इसको। जैसे देखो, एक रेटिंग दिया, एक रेटिंग दिया हुआ है। कुछ बोल रहे हो? कोई कुछ बोल रहा है क्या? मुझे समझ में आया ना ये चीज? यस सर। बोलो ना, अरे जो लोग मैकेनिकल से हो वो बताओ ना। यस सर। यस सर। नहीं समझ में आया ना स्टेप ऑफ यस सर, ट्रांसफर? समझ। अच्छा नहीं, क्या है बोलो तो, मैं ना मुझे ना थोड़ा सा ये नहीं मिल रहा है। मुझे ना थोड़ा सा ये नहीं मिल रहा है, क्या बोलते हैं वो, बस ये नहीं आ रहा है। थोड़ा सा बताओ ना, कोई एक बताओ, कोई मैकेनिकल से एक बताओ ना, क्यों हम लोग स्टेप ऑफ ट्रांसफर यूज करते हैं, प्लीज बताओ, जैसे बताए हम। प्लीज प्लीज, ये सब चीज कोई एक्सप्लेन नहीं करेगा। मैं देखा हूँ 2-3 साल से इधर देख रहा हूँ ना, कि सब चले जाएगा तुम्हारा प्रोटेक्शन में, पार्ट्स में चला जाएगा। बट ये सब चीज ना क्वेश्चन में पूछा जाता है इंटरव्यू में, और मैं देखा हूँ बोल के ये सब चीज को ऐसे हम खुद को एक्सप्लेन किए। प्लीज बताओ ना, कोई बताओ मैकेनिकल से जो। अच्छा एक काम करो ना, एक मैकेनिकल से अभी तक सबसे हम कौन बताएगा? अच्छा वो वो ये चंद्रेश्वर साहू जो है ना, हेलो चंद्रेश्वर साहू, अरे रिप्लाई भी नहीं करता है। चलो सर एक्चुअली जो आई स्क्वायर आर लॉस है, इसको मिनिमाइज करना पड़ेगा, इसलिए स्टेप ऑफ नहीं तो फिर ट्रांसफर। कैसे बताओगे? कैसे अगर कोई पूछेगा कि हम लोग जनरेटिंग ट्रांसफर स्टेप ऑफ ट्रांसफर क्यों होता है, वो कैसे बताओगे? स्टेप ऑफ ट्रांसफार्मर में हम वोल्टेज बढ़ाते हैं। वोल्टेज बढ़ाने से एक्चुअली पावर कांस्टेंट रहता है, सो करंट कम रहता है, एंड बिकॉज ऑफ दैट आई स्क्वायर आर लॉस कम होता है। आई स्क्वायर लॉस कम होगा तो प्राइस बेनिफिट क्या है? ultimately we get higher efficiency because एकदम ऐसे बोलना है। वेरी गुड, वेरी गुड। अल्टरनेटिवली हम लोग बोल सकते हैं, इफ वी मिनिमाइज द आई स्क्वायर लॉस सो आवर एफिशिएंसी विल बी इंक्रीज। वेरी गुड, वेरी गुड, वेरी गुड। ठीक है ना? अब देखो ये ना एक एग्जांपल है, ये नीड ऑफ ट्रांसफॉर्म है ना, एक एग्जांपल दिया हुआ है, एक एग्जांपल दिया हुआ है, तो एक बार देख लो। इसको भी मैं एक्सप्लेन कर देता हूँ, थोड़ा ऐसे भी एक्सप्लेन कर सकते हो जो कि ये लोग बोला है। जैसे कि मान लो स्टेप ऑफ ट्रांसफॉर्म का मतलब क्या होगा, प्राइमरी साइड में लेस नंबर ऑफ टर्न और सेकेंडरी साइड में हाई नंबर ऑफ टर्न। ठीक है ना? सपोज देखो एक एग्जांपल दिया हुआ है, सपोज पावर इक्वल टू, वी कंसीडर दैट 100, पावर इक्वल टू 100 मेगावाट, पावर इक्वल टू 100 मेगावाट दिया हुआ है। वोल्टेज इक्वल टू जहां पे 10 केवी दिया हुआ है, और करंट इक्वल टू दिया हुआ है 10 किलो एम्पियर। ठीक है ना? तो सब मिला के देखो V into I करोगे तो 100 मेगावाट आ जाएगा। ठीक है ना? अभी देखो अगर हम लोग ये पावर को अगर
ट्रांसमिट करना चाहते हैं, यही पावर को अगर ट्रांसमिट करना चाहते हैं तो मान लेते हैं लाइन का रेजिस्टेंस जो है, लाइन का रेजिस्टेंस आर लाइन का मान लेते हैं 1 ओम है, आर लाइन का 1 ओम है। हम लोग बिना ट्रांसफार्मर का ही कर रहे हैं, स्टेप अप बिना ट्रांसफार्मर का ही कर रहे हैं। मान लो 1 ओम मेरा लाइन इंटरनल रेजिस्टेंस है, तो मेरा लॉस कितना आएगा, आई स्क्वायर आर लॉस कितना आएगा, देखो 10 किलो एम्पियर मतलब 10 किलो एम्पियर स्क्वायर इनटू आर मतलब 1, तो हम लोग क्या बोल सकते हैं कि ये आ रहा है 100 किलो एम्पियर, सॉरी 100 किलो एम्पियर इनटू 1, ठीक है, ये अब मेरा आ रहा है 100 किलो एम्पियर इनटू 1। अगर पावर फैक्टर को हम लोग कंसीडर नहीं भी करते हैं तब भी इतना अमाउंट तक आ रहा है, हाँ ये मेरा लॉस आ रहा है, ठीक है ना। तो अब देखो, अब किलो एम्पियर और ये तुम्हारा रेजिस्टेंस आएगा तो ये क्या होगा, ये किलो वाट बन जाएगा, ठीक है ना। तो इसको हम लोग लिख सकते हैं 100 किलो वाट, तो इतना लॉस हो रहा है। अभी ना हम लोग एक ट्रांसफार्मर यूज किए जिसका प्राइमरी साइड में 1 है और सेकेंडरी साइड में 10 है, प्राइमरी साइड पे टर्न 1 है और सेकेंडरी साइड पे टर्न 10 है। तो मान लो इधर अगर 10 किलो एम्पियर आएगा तो इधर कितना आएगा, 1 किलो एम्पियर, है ना, 1 किलो एम्पियर आएगा। इधर अगर 10 किलो एम्पियर तुम दे रहे हो तो 1:10 करोगे तो 1 किलो एम्पियर आएगा, क्योंकि वोल्टेज, क्योंकि करंट घटेगा इसमें, ठीक है ना, 1 किलो एम्पियर। तो अगर 1 किलो एम्पियर को अगर हम लोग ट्रांसमिट करेंगे तो आई स्क्वायर आर लॉस और 1 किलो एम्पियर कितना आ रहा है, 1 किलो एम्पियर इनटू स्क्वायर इनटू आर कितना था 1 ओम, तो ये कितना आ रहा है 1 किलो वाट। तो देखो जैसे हम लोग स्टेप अप ट्रांसफार्मर यूज कर दिए तो करंट क्या होगा, मिनिमाइज हो गया, ठीक है, करंट मिनिमाइज हो गया तो क्या होगा, करंट मिनिमाइज हो गया तो क्या होगा, मेरा लॉस भी मिनिमम हो गया। तो एक चीज इधर देख लो, एक चीज देख लो, जो लोग मैकेनिकल से हो ना वो थोड़ा एक चीज देख लो। देखो जैसे मेरा रेटिंग क्या था, मेरा रेटिंग था 100 किलोवाट, है ना, मेरा 100 मेगावाट था रेटिंग, 100 पावर था 100 मेगावाट। अच्छा वोल्टेज कितना था 10 केवी, वोल्टेज था 10 केवी और करंट था 10 किलो एम्पियर, ठीक है ना, 10 किलो एम्पियर, तो मिला के होता है 100 मेगावाट। तो अब एक चीज देखो, अगर ये 10 केवी इधर से आ रहा है, 10 केवी इधर से आ रहा है, तो 10 केवी इधर से आएगा तो इधर कितना जाएगा 1, इधर जाएगा क्या 100 केवी, क्योंकि 10 टाइम्स बढ़ रहा है, 10 टाइम्स बढ़ रहा है, 1:10 है एज पर मैथमेटिकल कैलकुलेशन। अगर ये 10 होगा तो ये 100 केवी होगा, ठीक है ना। और करंट में क्या होता है, हम लोग क्या बोले कि P/I = V होता है, और क्या होता है V प्रोपोर्शनल टू R होता है, R इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू 1/I होता है। तो ये 10 केवी होगा तो ये क्या होगा 10 किलो एम्पियर, क्योंकि 10 किलो एम्पियर मेरा इनपुट करंट है, देखो 10 किलो एम्पियर मेरा इनपुट करंट है तो 10 किलो एम्पियर होगा, और तो ये क्या होगा 1 किलो एम्पियर, क्योंकि इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। तो देखो 10 × 10 100 मेगावाट इज डू 100 × 1 100 मेगावाट। तो मेरा क्या हुआ, पावर मेरा फिक्स्ड रहा, पावर मेरा फिक्स्ड रहा। जैसे ही वोल्टेज 10 केवी अप्लाई किए, 1:10 का रेशियो का ट्रांसफार्मर है तो ये 100 केवी बना दिया। अब वोल्टेज अगर क्या होता है प्रोपोर्शनल टू आर, आर का मतलब क्या होता है नंबर ऑफ टर्न, तो नंबर ऑफ टर्न के साथ प्रोपोर्शनल है, और ये क्या है इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। करंट क्या होता है देखो ना, V प्रोपोर्शनल टू R, R प्रोपोर्शनल टू N, नंबर ऑफ टर्न और रेजिस्टेंस सेम होता है। और करंट क्या होता है इनवर्सली 1/R और इनवर्सली 1/N, तो इनवर्स होगा, इनवर्स होगा, इनवर्स होने का मतलब क्या होता है, ये 10 केवी हुआ तो ये 100 केवी हो गया, 1:10 है, 10 केवी हुआ 100 केवी हुआ, तो ये कितना है इनपुट कितना है 10 किलो एम्पियर, ये 10 किलो एम्पियर है, तो ये क्या होगा 1/10 हो जाएगा। मतलब क्या हुआ, इसमें क्या हुआ इनटू 10 हुआ, क्यों लीनियर है, और इसमें क्या हुआ 1/10 हुआ, क्यों इनवर्सली। देखो जो लोग मैकेनिकल से हो डिप्लोमा हो वो लोग देखो 1/R कर रहे हैं, तो 1/R का मतलब क्या है 1/10 हो जाएगा, 1/10 हो जाएगा। और इसमें क्या है वोल्टेज के साथ क्या है, वोल्टेज के साथ लीनियर है, तो क्या होगा इनटू 10 होगा, या इसमें भी बोल सकते हो इनटू 1/10। इसमें क्या हुआ लीनियर है, वोल्टेज के साथ नंबर ऑफ टर्न लीनियर है, 10 केवी अप्लाई किए तो इधर कितना आएगा कि वोल्टेज के साथ n नंबर ऑफ टर्न 1:10 टर्न है, तो टर्न क्या है लीनियर है, तो 10 केवी इधर आओगे तो 100 केवी हो जाएगा, लेकिन इनटू 10 होगा क्योंकि ये लीनियर है। और जो करंट होता है, करंट के साथ नंबर ऑफ टर्न क्या होता है 1/, होता है, तो 1/(1/10 होगा, तो इधर 10 किलो एम्पियर का इनपुट दोगे तो इधर 1 किलो एम्पियर आएगा। तो देखो हिसाब करके देखो दोनों में 100 मेगावाट आ गया। अब बेनिफिट क्या हुआ, जैसे इधर 1 किलो एम्पियर हो गया तो मेरा क्या हुआ 1 किलो एम्पियर अगर करेंगे तो मेरा लॉसेस जो है, लॉसेस क्या होगा I² R के हिसाब से आएगा, लॉसेस रिड्यूस हो गया। अगर 10 किलो एम्पियर फ्लो करता तो ह्यूज अमाउंट ऑफ लॉस देता, बट
इधर क्या हुआ, कम हो गया। तो ये चीज को मैं थोड़ा सा कैलकुलेशन करके भी दिखाया हूं, इसको देख लो थोड़ा सा। देखो ये दिया हुआ है, तो अगर 10 किलो एम्पियर पर ये करेंगे तो 10 स्क्वायर इंटू 1 100 किलोवाट आ रहा है। अब ठीक है, अब देखो जैसे ही मेरा 1:10 का ट्रांसफार्मर पीपीटी में देखो 1:10 ट्रांसफार्मर किए तो I2 क्या हो गया, 1 किलो एम्पियर हो गया। ये I2 जो है, ये I2 जो है देखो 1 किलो एम्पियर हो गया, क्योंकि 1:10 ट्रांसफार्मर है तो 1 किलो एम्पियर आ गया। तो 1 किलो एम्पियर आएगा तो क्या होगा, 1 किलोवाट आ जाएगा। ठीक है, तो हम लोग क्या किए, स्टेप अप ट्रांसफार्मर यूज करके हम लोग क्या किए, लॉस को मिनिमाइज कर दिए और एफिशिएंसी को बढ़ा दिए। देखो इसमें पावर सेविंग भी दिखा हुआ है। L1 जो था, जो पहले में जो 10 किलो एम्पियर को जब हम लोग ट्रांसमिट कर रहा था तो उसमें I2R लॉस जो आ रहा था, I2R लॉस जो आ रहा था वो 100 किलो एम्पियर था, 100 किलोवाट था। अब जैसे 10:1:10 का एक ट्रांसफार्मर यूज किया, स्टेप अप ट्रांसफार्मर, तो मेरा लॉस कितना आ गया, 1 किलोवाट आ गया। तो जैसे ही मैं स्टेप अप ट्रांसफार्मर यूज किया तो मेरा क्या है, 99 किलोवाट का बेनिफिट आ गया। सो यू हैव टू सेव योर पावर as 99 kilowatt. So that's why we use the step up transformer in generating transformer. ठीक है, तो अभी थोड़ा सा एक चीज और लास्ट बता देते हैं, उसके बाद हम लोग नेक्स्ट दिन इसको कंटिन्यू करेंगे। वो क्या है कि why we keep the frequency constant. फ्रीक्वेंसी कांस्टेंट हम लोग क्यों रखते हैं, ये भी बहुत वाइटल है। प्लीज देख लो, ज्यादा टाइम नहीं लेंगे और इसको ही हम लोग करके खत्म करेंगे, क्योंकि ये भी क्वेश्चन पूछा जाता है। क्योंकि as per the transformer definition, if you see that transformer is a static device, it works under mutual induction and keeping frequency and power constant. So keeping frequency and power constant, keeping power constant का मतलब क्या बोलोगे, it behave like a gear system. So that's why the power conservation rule is applicable here. अगर कोई पूछेगा कि frequency constant क्यों रखा जाता है तो वो चीज को थोड़ा देख लो, इसको सिर्फ ऐसे ही याद रखना। छोटा सा चीज है, बहुत छोटा सा है, बट बहुत वाइटल भी है। जैसे कि कोई भी मशीन का जो लॉस होता है ना, मैं बार बार ये चीज बोला हूँ, फिर से मैं बोल रहा हूँ, लॉस जो होता है जिसको हम लोग वाइटल लॉस बोलते हैं, इंपॉर्टेंट लॉस बोलते हैं, लॉस इज बेसिकली 2 टाइप। वन इज आवर आयरन लॉस, आयरन लॉस को कोर लॉस कहते हैं, आयरन लॉस को कोर लॉस कहते हैं, एंड अनदर इज आवर कॉपर लॉस, ये अनदर इज आवर कॉपर लॉस। ये जो आयरन कॉपर लॉस होता है वो मेरा I2R लॉस होता है, I2R लॉस, R stands for the resistance, it's also the your heat loss, okay, it also treated as a heat loss, I2R loss or heat loss, okay. And iron loss or core loss basically 2 types. It depends upon the nature of the core, or it defined as a pH is our hysteresis loss, and PE is our eddy current loss, okay. So eddy current loss, okay, that eddy current loss is called circulating current loss, ये थोड़ा सा हम बता देंगे ताकि जो लोग इलेक्ट्रिकल से वो पता रहे। तो हम लोग जो आयरन लॉस और कोर लॉस होता है वो डिपेंड करता है 2 चीज के ऊपर, एक हिस्टेरेसिस लॉस के ऊपर और एक एडी करंट लॉस के ऊपर। बोथ आर डिपेंड अपॉन द मैग्नेटिक मटेरियल और मैग्नेटिक कोर के वजह से ये चीज दोनों चीज डेवलप होता है, ठीक है ना। तो अब देखो हिस्टेरेसिस लॉस और एडी करंट जो लॉस है, अब हम लोग क्या जानते हैं कि लॉस का 2 टाइप है, ये तो क्लियर हो गया, एक कॉपर लॉस, I2R लॉस, ये जो दोनों लॉस है ना ये सबसे वाइटल लॉस है इलेक्ट्रिकल सिस्टम में। अच्छा, ये और एक चीज है, ये जो कॉपर लॉस और हीट लॉस जिसको बोल रहे हैं ना, इसको हम लोग कहते हैं वेरिएबल लॉस, इट मींस व्हाट, इफ यू चेंज योर रेजिस्टेंस, the variable loss will be increased, okay। और ये जो आयरन लॉस होता है ना या कोर लॉस होता है, इसको हम लोग कहते हैं फिक्स्ड लॉस मतलब क्या है, जैसे ही तुम मान लो कोई कोर को डिजाइन कर लोगे, once you design your core, automatically that fixed loss of the iron loss or core loss will be fixed depending upon the core structure, that core loss is fixed। जैसे
मेरा जो बॉडी का स्ट्रक्चर है, मेरा अंदरूनी पार्ट को चलाने के लिए जो लॉसेस हो रहा है, ब्लड सर्कुलेशन के लिए जो लॉस हो रहा है, वो फिक्स्ड है। अगर कोई 6 फीट का आदमी रहेगा और एक 6.5 फीट का आदमी रहेगा, तो डिपेंडिंग अपॉन द नेचर ऑफ द बॉडी, योर फिक्स्ड लॉस, जो कि ब्लड सर्कुलेशन करना, हार्ट बीट करना, ये भी तो एक एनर्जी चाहिए ना, वो एनर्जी तुम्हारा कांस्टेंट हो जाएगा। It means what? If you once you fixed your core diameter, core area, core cross section, core volume, segment, plate, जो भी तुम्हारा है, वो जैसे तुम फिक्स कर दोगे ना, साइज फिक्स कर दोगे, तो तुम्हारा ये जो लॉस हो गया, ये लॉस फिक्स हो जाएगा। ठीक है, बट ये जो प्रॉपर लॉस है, इसको हम लोग कहते हैं वेरिएबल लॉस और हिट लॉस। इसका मतलब क्या है कि अगर हम लोग रेजिस्टेंस को बढ़ाते जाएंगे तो ऑटोमेटिकली वेरिएबल लॉस बढ़ता जाएगा। अब एक चीज देखो, हम लोग फिर से एफिशिएंसी का इक्वेशन लेके आते हैं। एफिशिएंसी, क्योंकि जो भी मशीन होता है, ऑल आर डिपेंड अपॉन द एफिशिएंसी। सो एफिशिएंसी इक्वल टू हम लोग क्या जानते हैं, आउटपुट बाय इनपुट। अब आउटपुट क्या होता है, मैं फिर से रिपीट कर रहा हूं, इनपुट माइनस लॉस by input. So now, if anyone asks you how you improve your efficiency, machine efficiency, so your answer will be like that. Yes, sir, we have to minimize the loss. We have to minimize the loss. Once we try to minimize our loss, automatically efficiency will be increased. And as per the machine knowledge, the losses are two types. One is our variable loss, another is our fixed loss. Okay. Variable loss is not our control. It's not our control. It depends upon the load. If this R is nothing but a load resistance. If you increase the load resistance, automatically this loss will be increased. So this part is not our hand, but this part is our hand. That iron loss or core loss. You can design the machine. You can design the machine such a way that it produce less amount of hysteresis loss and the eddy current loss. It entirely, this iron loss or core loss is designed by the designer itself. The designer can control the two loss, hysteresis loss and the eddy current loss. So this part is our fixed loss and this part is in our control. So it means what? If we are able to control this part only, we receive high amount of efficiency. Because as I was told you that efficiency is equal with the input minus loss by input, and the loss is generally two types. So this one is not our hand. Copper loss is not our hand, so it will be changeable. But that iron loss is our hand. So it means what? If we are capable to control that iron loss or core loss, definitely we achieve the high efficiency. Okay, so that's why if you see, no, not that's why, if you see, there is an equation. What? Nothing. So if you see now, you see in the PPT itself, there is because there is an equation, but I am not consider about the equation only because we not required that equation. If you see the equation now, iron loss, hysteresis loss and eddy current loss, both loss, hysteresis loss and the eddy current loss, both are depend upon the frequency. If you see here, pH equal to KH, KH is the constant term, BF, B into F, and there is a 1.6, whatever it is, BF, and both eddy current loss also, it also depend upon the B square, F square, like that. So B is a flux density. Don't go for that one only. You just think about this, that pH is depend upon the frequency and PE depend upon the frequency. So if you see the hysteresis loss is proportional to frequency, and similar fashion that eddy current loss also depend upon the frequency square. Okay, so both laws are depend upon the frequency. Now if we are capable to fix our frequency, what will happen? The loss will be fixed. Because once you change your frequency, it means what? Your iron loss also will behave as a variable loss. So if your both loss is variable loss, automatically your efficiency should be variable, and it is not required. Okay, so to fix our efficiency, we need to control our iron loss,
and the iron law is defined by hysteresis laws and eddy current laws, and those both hysteresis laws and the eddy current laws depending upon the frequency. So it means what? If you fixed your frequency for a machine, what will happen? Your hysteresis laws and eddy current laws is fixed. Once you fix this loss now, you can calculate efficiency depending upon only the variable loss. So it means what? It means number of variant is less. जैसे होता है ना, बहुत सारा सामान अगर हम लोग देखते हैं ना, तो हम लोग खुद ही कंफ्यूज हो जाते हैं कौन सा लेंगे कौन सा नहीं लेंगे. It means what? It means it straightly indicates that you are less efficient. So it means what? If you improve your efficiency, it means what? You have to reduce your loss. And loss is basically two types: iron loss and the copper loss. And copper loss is our variable loss. If your iron loss is defined by two terms, pH and PE, and both pH and PE, hysteresis of an eddy current loss, depend upon the frequency. So it means what? If you fix your frequency, automatically what will happen? Automatically this loss become fixed. It means entire efficiency depend upon that loss is depend upon the variable loss. So once you control this one, you can control the efficiency of the machine. So that's why in case of transformer, we keep constant the frequency. So do you have any doubt? Ask me. Sir, hello sir. Please sir. hold for a 2 minute now. Please hold for a 2 minute. জানি না স্যার, আমারও ক্লাস লেট হয়ে যাবে। আমি দেখে নিচ্ছি একবার, বিজি আছে অলরেডি। ঠিক আছে, ঠিক আছে, হ্যাঁ ঠিক আছে। Okay, so please, do you have any doubt? Please ask me. हेलो सर। हाँ सर जी, जैसे ये फ्रीक्वेंसी को कांस्टेंट रखने के लिए ये जो क्वेश्चन बताया जा रहा है सर, तो उसमें हम इस तरीके से बोल सकते हैं क्या कि मेन के जो कॉपर लॉस है वो हमारे मतलब हाथ में नहीं है, वो वेरिएबल लॉस है, हमें कम ज्यादा होते रहता है, और जो फिक्स लॉस उसको बोलो आयरन लॉस हिस्टेरेसिस लॉस पे डिपेंड करता है, इसीलिए आयरन लॉस को कांस्टेंट रखना। एकदम सही, ऐसे बोल सकते हैं, मेंटेन करेंगे। एकदम सही, you are right that why we keep constant frequency, because sir that if we keep constant the frequency, automatically that fixed loss or the iron loss will be fixed. So if the loss is fixed, so the efficiency will be improved or enhanced. ये टॉपिक एक है ना, ये टॉपिक आज सर वैसे तो हम आई स्क्वायर आर लॉस को भी सर कंट्रोल कर सकते हैं ना थोड़ा बहुत? ना कभी नहीं कर सकते हैं, बिकॉज वी कंसीडर एज पर द इंडियन इलेक्ट्रिसिटी कोड ना, लोड मस्ट बी वेरिएबल, लोड को होना ही पड़ेगा वेरिएबल, लोड कभी फिक्स नहीं हो सकता है, बिकॉज इट इंटरली डिपेंड अपॉन द योर आई स्क्वायर आर लॉस ना, एंड आई स्क्वायर लॉस मींस व्हाट? इट डिपेंड्स अपॉन योर लोड, दैट आरएल सिग्निफाई द लोड रेजिस्टेंस.
So definitely, automatically, each and every second it will be variable. Suppose in your home itself, now you see now, you suppose for a 10 minutes you just operate your fan, you just put on your fan and then you put off your fan. So automatically load demand will be changed accordingly, now. So we consider that load is always variable. We cannot consider load is a fixed. You can't consider it. हाँ बोलिए बोलिए क्या बोले, बोलिए ना, बोलो ना। हेलो सर। बोलो। हाँ सर, आप इससे पहले एक क्वेश्चन इक्वल टू सिंगल और थ्री फेज थोड़ा आवाज अंडर रूट आई, थोड़ा आवाज ना स्टार्टिंग हो रहा है। हाँ सर ये बोल रहे हैं जो लाइन वोल्टेज आप है ना, तो उसमें आर वाई बी दिया है, तीनों में से किसी को ले सकते हैं क्या आपका फेस वोल्टेज के लिए, कि कोई एक? सुनो ना, लाइन वोल्टेज को मेजर करोगे ना, लाइन वोल्टेज मतलब वोल्टमीटर के थ्रू ही करोगे ना, तो वोल्टमीटर का दो पार्ट है, तो दो पार्ट में तुम एक दोनों फेज को लगा ले सकते हो, आर वाई को ले सकते हो, वाई बी को ले सकते हो, आर बी को ले सकते हो, यही तुम कर सकते हो। तो ऑल ऑफ द योर लाइन वोल्टेज, तीनों में से कोई, हाँ तीनों में से कोई ले रहे हैं ना, आर वाई, क्योंकि मतलब वोल्टमीटर का काम क्या होता है, वोल्टमीटर मेजर द पोटेंशियल डिफरेंस। सो फॉर द पोटेंशियल डिफरेंस यू नीड टू अरेंज टू डिफरेंट पोटेंशियल ना, तो दोनों वायर को लेना पड़ेगा, आइदर आर वाई नहीं तो वाई बी नहीं तो आर बी। बोलो ना, बोलो ना, बोलो। नहीं सर समझ में आया सर, समझ में नहीं आया? जी सर, जी सर में आया सर। नहीं ठीक है ना, आज के लिए इतना ही सर, वो मतलब मतलब एक कोई अच्छा नहीं तो थोड़ा सा बोलो, तो कोई चाहिए तो कुछ भी। हेलो सर। अब ना आज हम लोग मैनेजमेंट का क्लास है हम लोग का, ठीक है ना, मैनेजमेंट का थोड़ा सा अच्छा से ये कर रहे हैं, मैडम लेंगे क्लास। हेलो सर। हाँ बताओ ना सर, ये बोल रहा था जैसे हम लोग 3 टाइप का ग्रिड यूज कर रहे हैं, ठीक है सर? हाँ 3 वोल्टेज लेवल का, 3 टाइप का मत बोलो। हाँ 3 वोल्टेज लेवल का ग्रिड अपन यूज कर रहे हैं, एक 220 केवी का और 400 का, 765 का। हाँ एकदम से, एकदम से ठीक है सर। हमारा जो 250 का जो यूनिट है सर, उसमें हम लोग का 1, 2 और 3 जो हम लोग का यूनिट है वो 400 केवी से डायरेक्टली के लिए है सुटेबल, और जो 4th वो 200 केवी के लिए है, ऐसा है ना सर? हाँ ऐसा दिया हुआ है, सही बात है। क्यों हाँ जानते हैं? ऐसा दिया जी। हाँ ऐसा दिया है, तो आपका क्वेश्चन क्या है बताओ। हाँ तो सर इसको क्लियर कर दीजिए, उसके बाद मैं अपना क्वेश्चन पूछ लूंगा नेक्स्ट पे। अच्छा ये क्लियर कर दूं, तो बात क्या होता है ना, it tell just like as I told you ना that your transformer substation is entirely defined by your load demand। मतलब क्या है कि लोड डिमांड को मीट अप करने के लिए हमको वोल्टेज लेवल हम लोग डिफरेंट यूज करते हैं, ये एक नंबर पॉइंट हुआ। दूसरा पॉइंट ये होता है जितना हम लोग हायर वोल्टेज लेवल में जाएंगे ना, उतना मेरा करंट लॉस कम होगा, ठीक है। तो क्या होगा, मेरा सिस्टम का एफिशिएंसी बढ़ेगा। बट मोर इंपॉर्टेंटली, जो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, हम लोग क्या करेंगे, मान लो एक चीज देखो, जितना मेरा लाइन लेंथ बढ़ेगा, एक बार थोड़ा सा बोर्ड में देखो तो अपार्ट फ्रॉम दिस, ये सब जनरल कॉन्सेप्ट है, बहुत बढ़िया क्वेश्चन पूछे हैं। तो R इक्वल टू क्या होता है, रो L बाई A। तो जितना मेरा लाइन लेंथ बढ़ेगा ना, लाइन लेंथ जितना बढ़ेगा उतना मेरा क्या होगा, रेजिस्टेंस बढ़ेगा, एज पर द इक्वेशन R इक्वल टू रो L बाई A, सिंपल सा इक्वेशन है। तो रेजिस्टेंस जितना बढ़ेगा ना, उतना मेरा क्या होगा, वोल्टेज ड्रॉप बढ़ेगा। तो हम लोग क्या करते हैं, जो लाइन ज्यादा जा रहा है ना, उसको हम लोग कोशिश करते हैं, या सिस्टम में जो रहते हैं वो लोग कोशिश करते हैं हायर केवी से जाए। मतलब सीधी सीधी बात ये है, 220 केवी का लाइन लेंथ जितना होना चाहिए, 400 केवी के केस में ना लाइन लेंथ ज्यादा होता है। जैसे पावर ग्रिड लोग ना 765 केवी यूज करते हैं, क्यों करते हैं, क्योंकि वो 765 केवी से क्या होता है कि लाइन लेंथ बढ़ने के साथ, लाइन लेंथ बढ़ने के साथ जो वोल्टेज ड्रॉप होता है
वो हम मैनिपुलेट कर पाए। तो हायर वोल्टेज जो हम लोग ग्रिड यूज कर रहे हैं या सबस्टेशन या बस बार यूज कर रहे हैं, दैट बस बार और ग्रिड, हायर वोल्टेज बस बार और ग्रिड entirely used to manipulate the voltage drop in line। ठीक है, अब देखिए इसका मतलब ऐसा नहीं है कि जैसे कि मान लो 220 केवी का जो हम लोग बस बार यूज कर रहे हैं, मान लो वो जा रहा है 50 किलोमीटर, ठीक है ना, 50 किलोमीटर, और हम लोग एक 400 केवी सिस्टम को लगा के रखे हैं, वो जा रहा है 70 किलोमीटर। तो 50 किलोमीटर और 70 किलोमीटर में उतना ज्यादा ड्रॉप नहीं हो जाता है। तो हम लोग क्या किए, जैसे ये लोग भी किए हैं कि 220 केवी और 400 केवी को ICT से कनेक्ट कर दिए, इंटरकनेक्टिंग ट्रांसफार्मर से कनेक्ट कर दिए, सो दैट इफ दिस लाइन, द डेडिकेटेड लाइन फ्रॉम द 220 kV may falls या कोई ब्रेकडाउन हुआ, so we can get the power uninterruptedly from the 400 kV switch yard और 400 kV बस बार। ठीक है ना, तो ये जो कंसेप्ट आया ना, जो इधर का कंसेप्ट है, ये बहुत अच्छा डिजाइन सोच के किया गया है कि हम क्या कर रहे हैं, हम दोनों एंड से बैकअप दे पा रहे हैं, ताकि अगर मान लो कोई भी एक एंड मेरा खराब हुआ, जैसे अगर फेजर डायग्राम सिंगल लाइन डायग्राम में आएंगे, तो सिंगल लाइन डायग्राम लाइक समवट लाइक दिस टाइप, मेरा ये आया, ये मेरा तो आपका 220 केवी का लाइन है या 220 केवी का मेरा ग्रिड है, और ये मेरा लाइन आया, ये मेरा लाइन है 400 केवी का, ये मेरा 400 केवी का मेरा सिस्टम है। अब दोनों के बीच में एक मैं आईसीटी लगा दिया, इंटरकनेक्टिंग ट्रांसफार्मर। इंटरकनेक्टिंग ट्रांसफार्मर ऑलवेज, ये चीज ना जितना भी लड़का प्रेजेंट हो, यूनिवर्सल ट्रूथ है, आईसीटी ऑलवेज ऑटो ट्रांसफार्मर, इट ऑलवेज ऑटो ट्रांसफार्मर। एक दिन ना इसका थोड़ा सा मतलब नेक्स्ट क्लास में अगर टाइम मिलेगा, इसको पूरा डिराइव करके दिखा देंगे कि ऑटो ट्रांसफार्मर ही क्यों हम लोग यूज करते हैं। तो एक ट्रांसफार्मर लगा दिए, so that what will happen, suppose your this one is a 220 kV, this one is a 400 kV, this one is our incoming feeder input, incoming feeder or input, and this one is our outgoing feeder, outgoing feeder। suppose your incoming feeder may fault, फॉल्स हो गया या कुछ प्रॉब्लम आया या कुछ आपको शटडाउन लेना पड़ा या आइसोलेटर को ऑपरेट करना पड़ा, so you at that time you can take the power from 400 kV itself by using the transformer, it just change that voltage level to 220 kV and you can supply the your load uninterrupted। so this is the main phenomena, we use both voltage level because 765 ना as per Indian standard rule generally, ये तो सुपर थर्मल स्टेशन है तो हम लोग यूज भी कर सकते थे, बट 765 इज बेसिकली डेजिग्नेटेड फॉर द पावर ग्रिड साइड। तो इसीलिए ना ये लोग के पास पैसा भी था, ये लोग बहुत अपना ब्रिलियंट भी हैं, जो लोग ऑपरेशन में है वो लोग क्या किए, अपना दिमाग लगा के दोनों डिफरेंट वोल्टेज लेवल को चूज किए, सो दैट हम लोग को अगर लॉन्ग लेंथ में प्रोवाइड करना है पावर को, तो हम लोग will यूज करेंगे 400 केवी से। तो 400 केवी से अगर यूज करेंगे तो मेरा क्या होगा, ये वोल्टेज लेवल हाई है तो ऑटोमेटिकली इट कैन मैनिपुलेट द वोल्टेज ड्रॉप, इट कैन मैनिपुलेट द वोल्टेज ड्रॉप। जितना हम लोग हायर केवी में जाएंगे ना, लाइन लॉस को उतना वो मैनिपुलेट कर पाएगा, जितना हम लोग लोअर केवी में आएंगे उतना लाइन लॉस कम होगा। तो ये एक डिजाइनर का सोच है, वो कैसे डिजाइन करे ताकि अनइंटरप्टेडली हमको पावर सप्लाई भी मिले और मेरा कोई भी प्रॉब्लम आए या कोई अननोन या कोई नोन लोड बाद में ज्वाइन करे, नया लोड बाद में आए, मान लो इधर से मैं पावर दे रहा हूँ मैक्स टू मैक्स, ये आपका झारसुगुड़ा था कि मान लो मैं इधर से पावर दे रहा हूँ केरला तक, अब इधर से पावर अगर इस साइड में जाएंगे तो मान लो मैक्सिमम दे रहा हूँ मैं यूपी तक, अभी मुझे पावर को इधर से मैं सपोज बोल रहा हूँ इधर से मुझे दिल्ली तक जाना है, तो मुझे लाइन लेंथ बढ़ाना पड़ेगा, तो मैं हायर केवी को चूज करूंगा ना। बताइए आप क्या बोल रहे हैं, बताइए। हाँ सर, मेरा क्वेश्चन मेरा आंसर मिल गया सर। मेरा क्वेश्चन वही था कि जैसे 1, 2 और 3 यूनिट जो चल रहे हैं हम, उनमें से अगर कोई ये क्या है 400 kVA का है, अगर 400 kVA की यूनिट अगर चले जाते हैं तो उस कंडीशन पे अपन 4th यूनिट को लाइट अप लेते हैं, तो 4th यूनिट को लाइट अप, तो फिर वो जो डिमांड है हमारा, क्योंकि हमारा जीटी जो है वो तो कांस्टेंट है हमारा 220 kVA, तो उसको कहाँ पे मतलब जो उसको कहाँ पे मीटअप करते हैं वो मेरे को जानना था, तो ये यहाँ पे समझ और ट्रांसफार्मर के थ्रू अपन उसको मीटअप करते हैं। यस सर। जैसे आपको ये दिख रहे हो ना, जैसे मेरा जो था, मैं स्टूडेंट में था जो काम किए थे हम भी मेनली बेसिकली मेरा जो एक्सपीरियंस जो है थ्रू आउट एक्सपीरियंस मेरा स्विच के ऊपर ही है। हाँ, तो हम लोग भी क्या करते हैं, हम लोग के पास 2 बस बार था,
132 एंड 66, ठीक है। तो हम लोग क्या कर रहे थे, वो आईसीटी आपका 100 MVA का आईसीटी हम लोग यूज कर रहे थे, जब तो MVA ज्यादा है, 100 MVA का आईसीटी यूज कर रहे थे, और उसमें हम लोग क्या किए थे, 132 kV का जो लाइन था मेरा, वो जा रहा था 82 किलोमीटर के आसपास, और उसमें भी हमको लॉस हो जा रहा था। तो हम लोग क्या किए ना, और एक सबस्टेशन बनाए उधर जहाँ पे लॉस आ रहा था, हम लोग फिर से आईसीटी यूज करके किए। तो आप ये चीज देखो, तो मतलब क्या हुआ, इसका मतलब ये नहीं कि जो जिस कंपनी में मैं काम कर रहा था उधर का आदमी लोग के पास ब्रेन नहीं है, ब्रेन डेफिनेटली है, बट वो लोग ये नहीं सोच पाया था कि हमको 85 किलोमीटर तक भी जा सकते हैं हम लोग। तो इसीलिए वो क्या किया, 132 में भी रिजर्व हो गया। अब देखो जेपीएल के पास इतना बड़ा प्लांट है, इतना टैलेंटेड पर्सन है, ये लोग ऐसे डिजाइन करके रखते हैं कि मैं किसी भी हालत में सिचुएशन एक हाई कम लार्ज एक्सटेंट तक पावर को कैरी कर सकता हूँ। तो ये चीज हम लोग खुद फेस किए थे। तो हम लोग क्या किए थे, जो 85 किलोमीटर था उसको 45 में ब्रेक करके हम लोग पावर को ट्रांसमिट किए थे। ये 2015 के बाद बोल रहा हूँ, हाँ सिंगरौली के पास ये चीज हुआ था, तो हम लोग किए थे वो चीज को। तो ये चीज ना मैं देख रहा हूँ, खुद भी देख रहा हूँ, उसको खुद भी फेस किया हूँ चीज को, कि हायर केवी जैसे हम लोग करेंगे ना, तो आप सिंपल सा देखोगे हायर केवी के केस में ना वोल्टेज ड्रॉप सिंपल सा हो जाएगा। आप पैनल रूम में भी देख सकते हो, पैनल रूम में 10 मीटर का एक केबल है, 20 मीटर का एक केबल है, आप सिंपल सा टॉर्क टेस्टर लगाओ, आप तो प्लांट में काम करते हो ना, सिंपल सा टॉर्क टेस्टर लगाओ, आप देखो वोल्टेज लेवल चेंज हो जाएगा। मतलब ये नियम ही ऐसा है कि जितना हम लोग हाई वोल्टेज में जाएंगे उसका करंट लिमिट उतना घटता जाएगा, करंट लिमिट जितना घटता जाएगा उतना मेरा I2R लॉस या voltage drop is nothing but an I into R. So it means where if you see now each and everywhere the R is the main responsible item. Okay, तो R या करंट जैसे ही मिलता है तो ये आपका लॉस को क्रिएट करना है। तो आईसीटी से हम लोग ये काम कर सकते हैं। चलिए बहुत कुछ आज हो गया, शायद पता नहीं कितना आप लोग को समझ में आया नहीं आया, बट प्लीज थोड़ा सा जो भी मैं पॉइंट कवर किया ना, पॉइंट को थोड़ा सा कंसंट्रेट ना कीजिएगा, क्योंकि ये सब चीज ना आपको इंटरव्यू में ज्यादा आएगा। क्योंकि अभी आप लोग जितना भी पढ़ाई करोगे ना, जैसे ये जो अभी क्वेश्चन हमको एक पूछा, कितना अच्छा क्वेश्चन है, ये समझ में ही लग रहा है कि ये काम करते हैं। तो ये सब क्वेश्चन ना आपको मन में आएगा, क्योंकि आपको इनफैक्ट उसी चीज से डील करना पड़ेगा। आपको कोई नहीं पूछेगा कि इसका डायग्राम क्या है, आपको ये पूछेगा कि इसका एप्लीकेशन क्या है, उसका डेफिनेशन क्या है, और एप्लीकेशन को तभी पता चलेगा आपको जब प्रॉपर डेफिनेशन पता चलेगा। ठीक है ना, जैसे कोई पूछेगा, मैं फिर से रिपीट कर रहा हूँ, व्हाट इज द डेफिनेशन ऑफ द ट्रांसफार्मर? अरे सर, ट्रांसफार्मर मींस ट्रांसफार्मर, so it can transfer the power from one circuit to another circuit, that's enough। क्यों हमको स्टेप अप, स्टेप डाउन, स्टैटिक, पैटिक, ये सब क्या होता है? बी स्पेसिफिक ना, ये सब जितना भी हम लोग बीटेक में पढ़े हैं, और जो सर ये सब वर्ड सुनना पसंद करते हैं वो लोग उसी में रहते हैं, इसलिए वो सुनना पसंद करते हैं। इफ यू सी लिटरली ना, आंसर ऐसा होना चाहिए। तो जो भी हो, हम लोग चलिए हम लोग खत्म करते हैं। अच्छा, सेकेंड हाफ में ना हम लोग का पावर क्या बोलते हैं, वो मैनेजमेंट के ऊपर क्लास होगा, एक मैडम लेंगे, शिल्पिका मैडम लेंगे, ठीक है ना। वो पावर ऑफ आपका टॉपिक मैं बता देता हूँ अभी शायद आप लोग के पास भी आ गया होगा, मैं दुर्गेश जी को बोला था वो चीज। आज जो टॉपिक है वो है पर्सनालिटी डेवलपमेंट, मैनेजिंग सेल्फ एंड पीपल, ठीक है ना। इट्स कंप्लीटली डील विद योर मैनेजमेंट साइड। तो इसमें बहुत सारा चीज वो सिखाएंगे मैडम, आप लोग सीखोगे, ठीक है ना। And the entire syllabus also designed as CA benchmark, so no problem, not an issue. It's your regular under your regular course, so you have to adhere for that one. Okay, and hope you enjoy the session also. So thank you. Excuse me sir. Excuse me sir. कुछ समझ में आप लोग को आया होगा ट्रांसफर के बारे में? सर हेलो सर। हाँ सर, एक छोटा सा डाउट था सर। हाँ बोलिए ना। सर एक जो कॉपर लॉस है I2R, इसमें सर R को हम कम कर सकते हैं, आप जो फॉर्मूला बताया R इक्वल टू रो L/A, तो एरिया बढ़ा के लाइक थिकर वायर यूज करके, सर ये किया जाता है या फिर कुछ कॉस्ट एफिशिएंसी को? नहीं। अच्छा, ये जो आप बोले हो ना, एकदम इतना अच्छा बोले हो, एक एक क्वेश्चन आप उठाते हो, इतना अच्छा इसको एक्सप्लेन करने के लिए मन करता है। वो क्या है ना, तो देखो चीज देखो, आप सही बोले हो, R इक्वल टू रो L/A। हाँ, एरिया को अगर बढ़ाएंगे ना तो रेजिस्टेंस ड्रॉप होगा, बट एक चीज क्या होता है जानते हो, एरिया क्या होता है ना, एक चीज आपको बताते हैं। आप हो सकता है आप मैकेनिकल डिपार्टमेंट से हो, बट फिर भी प्लीज सुनो, ये मेरा रिक्वेस्ट है, इतना अच्छा क्वेश्चन पूछे हो तो देखो ना क्या होता है, करंट
डेंसिटी बोल के भी एक टर्म होता है, जैसे आप लोग बोलते हो ना वाटर डेंसिटी, स्टीम डेंसिटी बहुत होती है, सर तो density सर वाला में, तो current density सर मतलब क्या होता है, हेलो यूनिट क्रॉस सेक्शन एरिया। हेलो हाँ सर, आवाज थोड़ा धीरे आ रहा है सर। ठीक है, ओहो अच्छा ठीक है ठीक है, जैसे एक क्वेश्चन अभी ठीक है ना, अभी ठीक है ना, जैसे आप क्वेश्चन पूछे थे ना हमको कि R इक्वल टू रो एल बाई एरिया को हम लोग अगर बढ़ा देंगे तो रेजिस्टेंस डिप कर जाएगा, तो I स्क्वायर R लॉस कम हो जाएगा। वेरी गुड। बट क्या होता है ना, जैसे आप लोग मैकेनिकल से हो ना, तो मैकेनिकल में बहुत सारा आप लोग डेंसिटी, स्टीम डेंसिटी, ये सब चीज पढ़ते हो, तो हम लोग का इलेक्ट्रिकल में भी ना एक टर्म आता है करंट डेंसिटी, जिसको J से डिफाइन किया जाता है। करंट डेंसिटी इक्वल टू होता है I बाई A। तो जैसे ही एरिया को आप बढ़ाओगे ना, तो करंट डेंसिटी घट जाता है। तो करंट डेंसिटी घटेगा ना, तो एज पर इलेक्ट्रिकल लॉ ना, मैग्नेटिक फील्ड जो जनरेशन होता है वो आपका क्या होता है ना, घट जाता है। तो ये कंट्रोल करके हम लोग तो लॉस को तो मिनिमाइज कर सकते हैं, बट लिटरली इफ यू सी ना, योर फ्लक्स डेंसिटी जो आता है, मतलब जिसको हम लोग कहते हैं फोर्स जो फ्लक्स डेंसिटी डेवलप होता है, ये पार्ट को कंट्रोल करना बहुत मुश्किल हो जाता है। तो ये इसका एप्लीकेशन उतना ज्यादा है नहीं। हाँ, उतना ज्यादा तो हम लोग करते नहीं है, क्योंकि हम लोग का ना एक मोटो भी रहता है कि इलेक्ट्रिकल फील्ड जनरेट हो रहा है, पैरेलली यू हैव टू जनरेट द मैग्नेटिक फील्ड आल्सो, तो उसमें ज्यादा इफेक्ट आ जाता है। तो इसका एप्लीकेशन उतना ज्यादा हम लोग नहीं करते। सर थैंक यू सर। ठीक है, चलिए सेकेंड हाफ में मिलते हैं। ठीक है, यस सर। ओके, थैंक यू सर। अच्छा मनीष कुमार पंडित, यू आर इन लाइन। मनीष कुमार पंडित, मनीष कुमार पंडित, इज दिस ऑडियोबल टू यू? मनीष कुमार पंडित, मनीष कुमार पंडित, अरे हाँ या ना बोलो ना ये। मनीष कुमार पंडित, मनीष, मनीष लाइन में हो? नहीं है मनीष। आस्क वन क्वेश्चन, सर जी 5:13 को एक बार फिर से समझा दीजिए। आई एम जस्ट फॉरगॉट टू सी दिस। ओके, later on we'll discuss. Okay, so thank you. थैंक यू थैंक यू सर। सो मच। थैंक यू सर।